So welcome back. This is lecture 2 of OMSM. This is for CMA Intermediate June 2023 attempt. Right? It is from section A, Operations Management of OMSM, chapter 2. Okay, so it finished with chapter 1. So chapter 2 is operations planning. Okay, so basically how you will plan all the operations. So again, as I said, when we talk about operations, it starts from facility location. Okay, where you want to, it starts with basically location. Okay, that is where your facilities, okay, or let me say an easier word, factory will be located. Okay, so where your factory will be located, this is location. Okay, after location you will go for layout. Okay, layout is internal arrangement. Internally, which department will come where, okay, and the flow of your whatever production you're going to do, how the flow will be arranged. So that is, we can say, internal arrangement. Okay, I'm starting with English as I've told you earlier. I'll start with English. I'll give you an Hindi summary. Okay, every 20 minutes I'll give you a Hindi summary. Okay, Hindi summary. So location, layout, okay, and all other things which you have to plan. So after layout, you also have to know what kind of machines you need, okay, and what kind of capacity you need, right? For example, in our homes, if you want to buy a geyser, okay, you first see like there are different capacities of geyser liters. Okay, based on your number of family members, you go for smaller or larger one. Similarly, we'll have to choose capacity. Okay, so what kind of capacity is required, right? Because you anytime if you go for over capacity, it's waste of your money. And many of these things which are done, these are all called as planning. Comes under planning. You have to plan all these things. Okay, all these things basically, whatever we are going to study in your course, it's all actually comes under planning, operations planning. Okay, so now this planning, okay, it all starts with, it doesn't start with the location. Okay, it starts with sales forecast. It starts with sales forecast. For example, if my sales is going to be 500 units, okay, then my decision on this would be different. If my sales is going to be 5,000 units, then again my decision on this would be different, correct? All these decisions are going to be based on how much I can sell. Okay, so which is why it's all going to start with sales forecast. That's also called as demand forecasting. Okay, so it will start with demand forecasting. Okay, first thing is try to find out how much demand you will have. Okay, and based on demand you will go for capacity planning, right? So I need to produce only what I can sell. So based on demand, capacity planning, right? After that, it is capacity requirement planning, which we will see later on. Difference between capacity planning and capacity requirement planning is capacity planning will tell you that I need to produce 5,000 units. This is what I can sell. Okay, capacity requirement will tell you for this 5,000, how many laborers I want. Okay, how many machines, and the types of machines. Okay, all these things. So this detailing of this capacity will be there in capacity requirement. Because there will be different kinds of capacities. You will need some laborers, you will, in laborers also, you will have grades, correct?
So in capacity requirement, you will say what are the types of capacities you need. All different types will be enlisted in capacity requirement. Okay. In facility location, you already know. Layout, you already know. Okay. Location is where will where will the factory be located, and layout will be the internally how will you arrange departments in the factory. Okay. That's also very important. Okay, layout, we will study layout and location in detail later on. So layout is also very important, right? And you have problems regarding layout also in the same chapter. Okay, in this chapter. So because what happens is sometimes say if your factory is like this, say this is your factory floor. Okay, and okay, let us say these are various departments in the factories. Okay, so now what happens is many times the way you arrange departments, okay, it should be based on the frequency of contacts between the departments. If say this is department A, okay, sorry, if this is this one, the first one is department A. Okay, this is department A, and this is whatever it is, let's say E or F. Okay, if the contact between these two is very frequent, should always try to put it next to department. That will save you lots of money. Here you can see small blocks, but in factories, these are huge spaces. This can be 1 square kilometer. This can be 2 square kilometers. So movement between them will entail lots of money. So which is why layout has to be planned based on frequency of movement of items between your departments. Fine. Okay. And then you have something called as resource aggregate planning. Okay. This we will take up later on when it comes. Then you will have material requirements planning. This is done using software, various software. SAP and all is used for materials requirement planning. Okay. We've got MRP1, MRP2. Okay. And then you have, so this MRP1 is called as material requirements planning, and MRP2 is called as manufacturing resource planning. These are all separate topics, so we are not going to discuss it this stage. Okay. Then you have got ERP. You would have heard about ERP a lot, right? Enterprise resource planning. So these three actually will study together because they are related. Okay. Then economic batch quantity. This is similar to economic order quantity, if you would have heard about that. So most of you would have done the first group. So in that, in materials chapter, you would have gone through EOQ. So this EBQ, this is called as EBQ. It's very similar in formula and everything. It is very similar to your EOQ. Okay. So we will again take it when it comes. Fine. So these are basically, you can just say that these are the contents. This is what we are going to study in this chapter. Okay, operations planning will have all these things. Now starting with demand forecasting. Okay, so यहाँ पे हमने ये जो देखा है हमने ये पूरे कंटेंट्स है आपके, ठीक है, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो. सबसे पहले जैसे हमने देखा कि डिमांड से ही स्टार्ट होगा, कि जितना डिमांड है उस हिसाब से ही हम फैक्ट्री लगाएंगे. करेक्ट. हमारा डिमांड अगर सपोज 100 यूनिट का है तो हम 1000 यूनिट का फैक्ट्री नहीं लगाएंगे. करेक्ट. वो वेस्ट होगा पूरा कैपेसिटी, क्योंकि आपको जितना बड़ा कैपेसिटी चाहिए उतना ही आपको खर्च करना पड़ेगा. करेक्ट. विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट, राइट. इसीलिए डिमांड फोरकास्टिंग पहले करके देख लिया जाता है कि हमारा कितना डिमांड रहने वाला है. बेस्ड ऑन दैट यू गो फॉर कैपेसिटी. ठीक है. और फिर बाद में आता है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट. ये सब हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको. ठीक है. एक एक पूरे टॉपिक्स आएंगे अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे. ठीक है. ये सारे आएंगे. ठीक है. सो लेट्स गो अहेड नाउ विथ डिमांड फोरकास्टिंग.
right? So forecasting word is something which you have heard a lot, correct? Forecasting is said to be peeping into the future. Okay, that is, you are looking into the future. Forecasting is nothing but looking into the future. In forecasting, you forecast for, sometimes you forecast for next month, sometimes it is next quarter, sometimes it is next year. Okay, there are various kinds of forecasts. Even forecast for the next 5 years, 10 years. So you are trying to look into the future and try to find out what future has in store. So it is not any guesswork. Okay, it is okay, it can be this. But why forecast is scientific? Because you base it on some data. Okay, you base it on some data, and based on that you forecast. So which is why it is scientific. Not to say that all forecasts are correct. Okay, so one like example was like in one of the companies I had worked. Okay, so we had we had um, it was a pilot project. Okay, pilot project means which we start for the first time. So in pilot project, in that what happened, whatever was forecasted, okay, that forecasted 3 times more. So basically they said that we will be able to sell 300 units. Okay, but actually we could sell only 1000 units. Okay, so it means that the revenue was forecasted as 3 times more. When forecast is off by such a huge amount, it's possible that you will have to close down the company. Okay, so which is why forecasting should be done on some proper basis. So here the forecast was not done on a proper basis. Nothing was used. Okay, you have to use proper data while forecasting. Okay, so for example, let me say that you are going to operate in an area. Okay, in that area you have, say, community A, community B, community C, and community D. Okay, each are 25, say 25 25 of each of them. Okay, all communities are here, this, but the product which you are producing is used by community C. Okay, so when you forecast it, you have to forecast using this 25, right? All others have to be excluded, right? Because community C is going to buy your product. Okay, for example, I'll give you an example. If you are going to sell sindoor, then you have to see only the Hindu community, because they will only buy it. Muslim community and Christian community might not buy, will not buy it, isn't it? It depends on your on what product you are selling. Okay, so if you consider the whole population of 100, okay, and then forecast, it is bound to go wrong. Okay, that's what happened here. So in practical life also, accurate forecasting is very, very important. Okay, so then the business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific methods. Okay, and it is based on facts and possible consequences. Okay, facts is, what are the facts? For example, which community is going to buy a product, or let us say, so community not doesn't always means religious community. Say if you are going to, you are selling pencils. Okay, so what your community will be, how many school going students are there. Okay, so that is the meaning of community. So based on facts and possible consequences, and you have to relate. Now just that, because just thinking that, say there are 25 members in a particular community, doesn't mean that all 25 will buy a product, right? We'll have to see many things. What is the cost of a product? What is the financial standing of them, of those people, correct? All those things also you have to see. So based on facts and possible consequences. The business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific methods. Okay.
These are systematic and scientific methods. There is no windfall, okay, based on facts and possible consequences. And this systematic method of probing the future is called forecasting. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा है कि फोरकास्टिंग क्या होता है, राइट? फोरकास्टिंग आप फ्यूचर बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बाबा बोल रहा है कि ये होने वाला है, ऐसा नहीं है ये फोरकास्टिंग। ये कुछ साइंटिफिक चीजों को देखते हुए आप बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसीलिए जो कुछ सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड से फोरकास्टिंग चूज किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके आपके एरिया में मान लीजिए 10 डिफरेंट कम्युनिटीज है, ठीक है? कम्युनिटी में कुछ भी यानी हम सिर्फ रिलीजियस नहीं, अब प्रोडक्ट कैसा बेच रहे हो उसके ऊपर से आप कम्युनिटी चूज करोगे। ओके, जैसे मैंने बोला कि आप सिंदूर बेच रहे हो, तो अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन डोमिनेटेड आपका एरिया है, ठीक है, तो वहां आपको सिंदूर बेच के कोई फायदा ही नहीं होने वाला, राइट? इजंट इट? सो दिस इज लाइक, और कुछ चीजों से हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि आप पेंसिल पेन बेच रहे हो ऐसे जगह पे जहाँ पे लेबरर्स रहते हैं, वो लोग तो पेंसिल पेन नहीं लेने वाले, राइट? ठीक है, तो इस तरह से आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं सब, ठीक है? फोरकास्टिंग इज पीपिंग इनटू द फ्यूचर, okay? And this sentence is business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific methods based on facts and possible consequences. This systematic method of probing the future is forecast. तो आपको ये लिखना है अगर पूछा तो, forecasting, okay, right? अच्छा, तो ये दिस इज, so सबसे पहले फर्स्ट, what will you forecast? Your sales, okay? Now once you forecasted your sales, okay, आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, इट विल प्रोड्यूस गुड्स एज पर द सेल्स प्रोग्राम, करेक्ट? सो सबसे फर्स्ट थिंग इन दिस hierarchy is your sales forecast, right? Based on sales forecast you will produce your goods or you will manufacture, okay, right? So although it will produce based on what sales forecast is there, but production and operations department, it has to prepare its forecast regarding machine capacity required, materials required, time required for production, etc., right? So यहाँ पे जो है, what production department is going to do, it entails a much bigger investment than just giving a sales forecast here. Okay, although sales forecast is number one, you'll start with sales forecast, but after sales forecast you'll come to know how many machines you need, and buying machines will be a costly affair, correct? So based on sales forecast, the production and operations department will decide how much machine capacity is required, so consequently how much machines are required, materials required, right? Who should be the suppliers, all that, fine. So for them to be able to do this, they need to know what happened in the previous periods, correct? आप कभी भी अगर आपने किसी भी कंपनी के लिए फोरकास्ट किए होंगे, most of you are students, so you would not have done it, okay, forecast. But how it is done is first base is seen as the previous forecast, okay? Previous forecast gives you a very good idea as to, so of course you have to change it, adapt it a bit, but gives you a good idea, okay, that you know, like in the previous period you produced, let us say you produced 5,000 shirts, okay, and for this you needed 1,000 sewing machines, okay, and 1,200 tailors, okay, whatever, this is for this much. So this practically you have seen that you will need this much time, okay? Even we in coaching institutes, okay, by previous time we get a good idea on how much time is required to complete a subject,
Okay, for example, so your OMSM, if it is going to be completed in say 85 to 90 hours are required for OMSM. Okay, so this idea comes from the previous period. Okay, because last time, previous period, the whole thing is done. So you get a very fair idea. So this holds good for everyone, all kinds of business. Okay. So you need to have a knowledge of what happened in the previous periods. Okay. So now to make a proper forecast, you need to assess controllable and uncontrollable factors. Okay. So if there are some uncontrollable factors, okay, as normally your controllable factors will be natural factors and government rules. Okay. So that is something you will not be able to control. So you know you cannot do anything about it. Controllable things will be what will be within your control. Okay. Both economic and non-economic. Certain things will relate to money. Certain things will not relate to money. It will relate to say well-being of workers and all that. That will be non-economic. Okay. Inside and outside the organization. So for good forecast, you have to assess controllable and uncontrollable factors. Can be economic and non-economic. Okay. Right. Right. So now we will go into forecasting of sales. ठीक है, ये पार्ट समझ गया आप लोगों को? इसमें कुछ समझाना है, कुछ नहीं रिपीट? सर। ठीक है, तो ये सब ये ओके है। मनोज जी आप ओके हैं? Yes, sir. Okay, so right, so we will go ahead now. So it is next now we'll see is forecasting of sales. Okay, we will focus on forecasting of sales, how this is done. Okay, we will be doing problems on this also. So now, what is forecasting? As we earlier saw, it's prediction about future sales followed by detailed analysis of facts which may affect the business as a whole. Okay, you are predicting future sales. Okay, not just predicting, but you are also saying that this much you can sell, plus there can be these competitors there. So your price may not be more than this. In forecasting of sales, okay, normally I will not just say that 100 units can be sold. Okay, when the forecasting team is forecasting, it will also say 100 units can be sold, but maximum price you can keep is ₹10, because you have other competitors also who are selling at this price. You should not go above it, then this will go down. If you go above 10, if you make it 9, okay, then this might become 80. Okay, so this is how forecasting data is given, right? The prediction about future sales followed by detailed analysis of facts which may affect the business as a whole. Okay, now forecasting is the most important activity in the business because all other activities depend on it. Correct? Sales forecasting, ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही इसके बेसिस में तो आप प्रोडक्शन का प्लानिंग स्टार्ट करते हो. ओके, तो सेल्स फोरकास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. ओके, right? So it is the basis of planning various activities, production, pricing policies, right? So because along with the sale, as I showed you, you are also shown that this is the sales you can get, but at this price. Okay, the pricing policies are also determined based on sales forecasting, right? So program policies and strategies based on sales, you will see like you know that okay, this is the total money you have at your disposal. You also know that you need a certain amount of profit. So that means you come to know about your cost. Okay, so you might have planned some more spending earlier on, but now maybe seeing that sales is not too much, you will have to curtail your cost. Okay, cost has to be curtailed or reduced, right? Personnel policies, personnel matlab your labor policies. Okay, as to recruitment, transfer, wages. Okay, so based on sales forecasting, in short, can I say that you will plan all other related activities. Okay,
right? Related activities will be what? Your production, your other program policies, okay, your labor related policies, etc. Everything will follow your sales forecasting. Okay. अच्छा, यहाँ पे है सेल्स फोरकास्टिंग में तीन चीजें बोली जाती है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, एक होता है आपका मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, एक होता है आपका लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। फाइन। सो देर आर थ्री थिंग्स, three main types of sales forecasting. If you are forecasting for a short period, you are forecasting for an intermediate period, or forecasting for a long range period. Okay. So short range forecasting basically is done for production planning. Period is few weeks to 3 to 6 months. So basically, if you want, say, for the next month or next 2 months, you want to manufacture, okay, certain units. For that, from where will you buy the product? Okay, where will you store it, in which go down, all that. For these things, you do not need to plan too much in advance. Okay, it will normally be production. This short range forecasting will be which you will do for production planning. Okay, we'll do this for production planning. Production planning, you'll hardly need some weeks to 3 to 6 months. Okay, right? Very big companies might need little more time, like 3 months, 6 months. Okay. So this is short range forecasting. So what they will ask you is, for production planning, which type of forecasting is used. So you should know that it is short range forecasting. Next is medium range forecasting. It can go up to 1 to 2 years. Okay. It can start from 3 months to 6 months, but can extend to 1 to 2 years. Okay. This is called as medium range forecasting. And then last is long range forecasting. We will see all of these. Okay. What is the purpose of all these forecasts? Long range is generally 5 years, but can extend to 10 to 15 years. As you can see the period, you will know that it will be for, if you want to buy a factory or something like that. Okay. You want to buy some huge machinery. These things, okay, basically your fixed assets kinds of things will come in long range forecasting. So now we will just see all these three forecasts. Okay, we'll try to analyze them. Now first let us take this long range forecasting. Okay, purpose of long range forecast is work out expected capital expenditure, okay, or acquire new facilities. Okay, if you said you might have a big factory, you want to acquire some smaller factories also. All that will be capital expenditure basically, right? That will be long range forecast. Now next is determine cash flow from sales. Now here you will say that sales normally is although it is, sales goes on throughout the year, but you will see the sales, say, once in a year, right? When you try to prepare your financial statements, okay? Or wherever you have quarterly financial statements, you can see that in quarterly period. हाँ सुमित जी बोलिए। सर ये पॉइंट नंबर 1 वाले को नहीं दोबारा बता दिए, टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वाला ना, वर्कआउट जी जी। ये जो है ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, कब आपको, ये हम बता रहे हैं कि कब आपको सिर्फ कुछ वीक्स का फोरकास्ट चाहिए, कब आपको मान लीजिए 6 महीने से लेकर 1-2 साल का फोरकास्ट करना पड़ता है, और कब आपको 5 साल पहले या 10-15 साल पहले फोरकास्ट करना पड़ता है, वो देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं 5 से 10-15 साल। जरूर तो यहाँ पे आप कुछ बड़ा चीज लेंगे जिसका इमीडिएट यूज नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में यूज उसका नापना पड़ेगा, करेक्ट। वही चीज आप इतने पहले आप फोरकास्ट करेंगे, करेक्ट। आप कोई नया फैक्ट्री लेना चाहते हैं तो आप 10 साल पहले से आप उसको फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। वो फैक्ट्री आपके लिए काम की है या नहीं है, कितना वो सेल्स देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में
ये बोल रहे हैं टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स और टू अक्वायर न्यू फैसिलिटीज। यानी कुछ बहुत बड़ा टाइप का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तब आप लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है। एंड सेकेंड इज टू एक्सपेक्ट determine expected cash flow from sales. Now sales is something which is a regular activity, correct? So why is it coming in long range forecast? Okay, this can be a question. So यहाँ पे what they are trying to say here is, say for example year, ठीक है, आप if you are if you want to go for some huge expenditure, you will have to compare, मान लीजिए वो expenditure you will write off in 10 years. ठीक है, 10 years expenditure is there. Now you have to compare with the sales which you will get for 10 years. This total expenditure, let me say, is 10 lakhs. Okay, but sales which I am going to get out of it is 40 lakhs. Okay, so it is useful, correct? So this sales cash flow from sales, when they are saying it is not for 1 month or 1 quarter, they are saying you have to compare these cash flows for the period of the capital expenditure. ओके, सबको एक ही लेवल में लाके आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा जो हम 10 साल का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ये फायदेमंद है क्या? इसमें 10 lakhs मशीन इज रिक्वायर्ड, से वेजेस, देयर विल बी सम वेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years. ये सब you have to compare and compare with the total sales which it is given. If the net is more, then it is useful. That's what it means to determine expected cash flow from sales. Okay, to plan future manpower requirements. So any long-term project you're going for, then you have to plan for future manpower requirements also. That also, because the project itself is long-term, so this manpower requirements will also be planned for a long-term. To plan material requirement, ये सब एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? So जैसे material requirement, when you are doing for current thing, it will be a short-term forecast. Okay, so this is basically we're talking about some long range project. R&D is always long range, correct? R&D जो करते हैं हम, वो तो काफी दूर के लिए वो होते रहता है. ओके, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ फैक्टर, यानी रिसर्च उतना ही कीजिए जितना आपका ग्रोथ होने की संभावना है. ठीक है, यू हैव टू डू रिसर्च ओनली एज मच एज यू विल ग्रो. Right, research is something like, if you can do more and more, it's well and good, but you should do only what you can support, or what your business can support. Okay, so these are the 5 points for long range forecasting. Okay, purpose of long range forecasting, you can see. Okay, purpose of long range forecasting, ये सब important questions है, आपको ध्यान में रखने हैं. Okay, so right, in long range forecast it's very important, it will, everything will be long term. Okay, so expected capital expenditure, okay, then just compare with expected cash flow from sales, future manpower, future material. Okay, so material, labor, or all capital expenditures you will put all together for production, correct, and then compare with sales. Okay, and R&D is always a long term. This gives you the points for long range forecast. Okay, so you should know all these points. Any question? सर Yes. सर जैसे इसमें जो क्वेश्चन अगर आता है कि लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के बारे में बताइए, तो इतना पॉइंट लिखना पड़ेगा या पॉइंट्स लिखने के बाद भी इसमें उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पॉइंट्स? वो आपको मार्क्स देखने पड़ेंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप बस ये पॉइंट्स लिख देंगे तो मोर देन इनफ. और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे छोटे, 4 मार्क वगैरह, ये सब चीज के लिए वो लोग आई डोंट, दे विल नॉट गिव यू फॉर 6-8 मार्क्स एंड ऑल. तो ये मैक्सिमम दिस दे विल आस्क यू फॉर 4 मार्क्स. आप बस ये पॉइंट्स एनलिस्ट कर देंगे तो मोर देन. इसमें भी आपको ना एग्जैक्ट वर्डिंग्स यूज करने की जरूरत नहीं. ओके, बट पॉइंट्स आ जाने चाहिए. जैसे
कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, मैन पावर रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट, R&D, ये पॉइंट्स आ जाने चाहिए, आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स। ओके, ओके this is purpose of long range forecast. Now next is purpose of medium range forecast. Okay, जो हमने मीडियम रेंज फोरकास्ट किए थे, ओके, विच वाज 3 to 6 months to 1 or 2 years. ओके, वो था आपका मीडियम रेंज फोरकास्ट। मीडियम रेंज फोरकास्ट में नॉर्मली यानी एक एवरेज पकड़ के चलिए, यू कैन से इट इज 1 year, फॉर 1 year. ओके, सो 1 year period में what do we do? We do budgetary control. Okay, budgetary control and all. Budgetary control is for a year you will prepare a budget and you will keep on comparing with the actuals, where it is whether the actuals are within the budget or not. Okay, तो इसीलिए मीडियम रेंज फोरकास्ट में you will get but budgetary control. Okay, determine dividend policy. Every year you have to pay dividend. That's also yearly activity, correct? So it will come in medium range. Anything which is yearly, no, it will come in medium range. Okay, ये लिखना है, जब पूछा गया अगर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखना है आपको, पीरियड 3 to 6 months में एक्सटेंड टू 1 to 2 years. ओके, तो शॉर्ट रेंज एंड कर रहा है, मीडियम रेंज वहां से स्टार्ट कर रहा है, 3 to 6 months. ओके, so wherever your short range is ending, here it is ending at 3 to 6 months, this is starting at 3 to 6 months. Okay, medium range. So medium range, so in on an average, anything which will be a yearly activity will always go with medium range forecast. Okay, so यहाँ पे budgetary control, dividend policy, all these are yearly activities, if you can see. Control maintenance expenses. Control is nothing but it's kind of your budgetary control only, control over maintenance expenses. Okay, so it's a yearly activity. Or to determine schedule of operations. Schedule of operations यानी कौन सा which operation will be done at how many intervals. ठीक है, इसमें आप scheduling वगैरह करते हैं, जिसमें you will have to it is done in the intermediate period. Okay, तो उसमें बोला जाता है scheduling वगैरह में कि ठीक है, आज आपने if you are manufacturing something today, ठीक है, the same product second lot will be manufactured after 1 month, after 1 month, ऐसा कर करके नेक्स्ट 6 months के लिए यू विल शेड्यूल इट. ठीक है, कब कब कौन कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या किस किस डेट किस किस टाइम में इट विल गेट मैन्युफैक्चर्ड, विच प्रोडक्ट विल गेट मैन्युफैक्चर्ड इन अ बिग factory. There are many products, right? Not everything gets manufactured together, so they have schedules for it. Okay, schedule of operations, the medium range forecast में आता है. And then to plan for capacity adjustments. So if you want to adjust, capacity creation nahi bol raha, okay? Capacity creation is long term. To buy a machinery, it's long term. Okay, you will not decide now itself, okay, tomorrow let's buy a 2 crore machine. Okay, so but capacity adjustment is what will happen is say you have an order which has to be delivered soon. Right now you have 12 workers working. Okay, you want to just adjust the capacity a little more, so just give them overtime. Okay, overtime, and make them these 12 workers equivalent to 16 workers. So this will be called as capacity adjustment. Okay, so ये capacity adjustment, it goes on all the time. Okay, based on whatever orders you have in hand. Okay, you have to, because you will never know, right? Now tomorrow one customer can cancel his order, right? Any new urgent order can come. So this capacity adjustments is also a continuing thing. Okay, it's put in intermediate term. Okay, medium range forecast. Fine. तो इसलिए आपको इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है मालूम होना चाहिए. बस पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स. ओके, राइट द पॉइंट्स, विल गेट द मार्क्स. नाउ लास्ट इज शॉर्ट रेंज. ठीक है, शॉर्ट रेंज में वट एवर इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल थिंग्स दैट विल कम. ओके, to estimate inventory requirement.
Okay, you are producing, for the next order, how much inventory is required for this week, for next week, how much inventory is required, like that. It will be in a short-term plan, right? You need this inventory why? To produce or manufacture. Manufacturing will be based on what? Your orders, okay, current orders, fine. So to estimate inventory requirement and to provide transport facilities for dispatch of finished goods, यानी डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये इसका मतलब है फॉर डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स बन गए हैं इसको, अच्छा नेक्स्ट वीक में वेयर ऑल यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, इन विच वेयर हाउस, ये सब इसके लिए सब आपको क्या 6 महीने पहले से यू डोंट नीड टू डिसाइड, राइट। इट्स अ शॉर्ट टर्म forecast, short range or short term forecast, okay. Then next is to decide workloads for men and machines, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा you already have those machines and everything, so यहाँ पे you will just adjust their workload, ठीक है। तो इसमें like for example adjusting means you have 5 machines, ठीक है, 2 3 4 5. Now this machine number 3 is now taking 50% of the load, and this is taking only 10% of the load. So you will have to adjust it in such a way that one machine doesn't work too much, ठीक है। आप इस तरह से एडजस्ट करो कि सारे मशीन में it is balanced 20-20 for everything. It will never be equal like this in practical scenarios, ठीक है। Practically यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 18, this much will be there, little bit of variance, okay. But make sure that it is not too much different, ठीक है, it should not be lopsided, okay. So to decide workloads for men and machines, to find the working capital needed, so working capital जो है is a normally, okay, overall you see it from a annual perspective, but quarterly also working capital you have to determine, ठीक है। क्योंकि every month में जो भी काम हो रहा है for little bit of payment and all that, your working capital is used, right? So it is called as short term. Then set up production run for the products, ठीक है। Production run is basically like in whichever batches you are going to run, ठीक है। Anything regarding production, ठीक है, ये नहीं बात कर रहे हैं, we are not talking about any new product which is coming into existence, and not that forecast. This is basically your day-to-day production, okay. To fix sales quota, ठीक है। सेल्स कोटा मतलब ये क्या होता है कि योर सेल्समैन, वट एवर सेल्समैन यू हैव गॉट, यू गिव देम कोटास, यू हैव टू सेल दिस मच प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर ऑल सेल्समैन ऑफ वेरियस टेरिटरीज you give them a quota, so that is sales quota is given kind of monthly sales quota, like that, sales or target sales target जैसे, okay. And then find the required overtime to meet the delivery promises. So overtime में छोटा मोटा adjustment के लिए you do the overtime, okay, smaller adjustment, right? So you have prepared 20 products you can prepare with the current workforce, but the order is for 22. तो जो current workforce है थोड़ा सा overtime दे दीजिए, आपका काम हो जाए. These are all short-term things. You don't decide this 2 years in advance, correct? Okay. So this is basically your purpose of short range forecast. तो ये आप समझ गए? किसी को anybody wants me to repeat this in Hindi? Purpose of नहीं short. चलेगा। ठीक, ये है, दिस इज द पर्पस ऑफ शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। वेरी ये सब सिंपल जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आपको बस याद रखना है वॉट एवर इज इन मीडियम रेंज इट विल बी इन मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज विल बी इन शॉर्ट रेंज, okay. But you write, you will get full marks in this. You write the correct points, you'll get full marks, ठीक है। So here also in short range there are 8 points, but you don't have to write all 8 points. Write 5 points, that's sufficient.
Okay. So now next what we are going to see is factors influencing sales forecast. ठीक है, तो सेल्स फोरकास्ट के ऊपर जो है क्या क्या फैक्टर्स है जिसका असर पड़ता है. ओके, what are the factors which will influence sales forecast? So while I am making sales forecast, if I am part of sales team and I am making sales forecast, ठीक है, what are the things I will look out for? मैं क्या क्या चीजें देखूंगा जिससे मेरे सेल्स फोरकास्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, so these are number one is environmental changes. Okay, so everything is good. Now suppose, now if I have seen that in UK there is recession, मान लीजिए, ठीक है, UK में there is recession. ठीक है, when recession happens क्या होता है, आपका सेल्स हर एक चीज का गिर जाता है, कॉस्ट फॉल्स, सॉरी द बेसिकली द सेलिंग प्राइस फॉल्स, करेक्ट. और सेलिंग प्राइस गिराने के बाद भी डिमांड नहीं क्रिएट होता है रिसेशन में, करेक्ट. रिसेशन इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है, बेसिकली सबका परचेजिंग पावर कम हो जाता है. ओके, सो ये देखा गया है कि whenever there is recession ऐसे मूव होता है, यूएस यूके वहां पे, देयर इफ रिसेशन हैपेंस देन इट कम्स हियर बाद में. ठीक है, एक साइकिल दो साइकिल के बाद यहाँ हमारे पास आता है. तो ये एक चीज है, आई विल लुक आउट फॉर सेल्स फोरकास्ट. अगर देयर इज अ रिसेशन देयर, सो आई विल, इफ आई एम फोरकास्टिंग 10,000 यूनिट्स फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आई माइट थिंक दैट दिस रिसेशन इफेक्ट माइट कम टू मी, तो मैं इसको आई शुड एडजस्ट इट. जो भी हो उसको सोचिए, वट एवर इम्पैक्ट यू थिंक इट विल बी, अगर 6,000 तो 6,000 वट एवर, ठीक है. बट तो ये पॉइंटर को मैं ध्यान रखूंगा, कहने का मतलब है. ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन अफेक्ट माय सेल्स, दैट इज एनवायरमेंटल चेंजेस. ओके, एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि ठंडी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है. ओके, नॉट दैट एनवायरमेंट, दिस इज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट. ओके, so this will affect sales forecast. Then next is changes in the preference of the user. So there are some products, ठीक है, जो especially जो यंगर लॉट होता है, ठीक है, जो यंगर लॉट होता है, जैसे फैशन की जो चीजें होती है ना, फैशन के वो सब बहुत जल्दी चेंज होते हैं. लेकिन जो हम पुराने जो चीजें पुराने लोग जो पहनते हैं, जैसे वो तो दे काइंड ऑफ वेयर द सेम थिंग एंड दे प्रेफर नॉट टू चेंज. 10, 10, 15 साल दे विल वेयर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, कुछ चेंज नहीं आएगा. बट जो यंगर ये है, कभी कभी दे स्टार्ट वेयरिंग दैट हुडी आया था बीच में. ठीक है, जो जो भी बच्चे मान लीजिए 10th से लेके यू कैन से कॉलेज तक, टीनेज वाले सर, टीनेज वाले ये लोग, इनका जो वेयरिंग जो पहनते हैं ये बहुत वोलेटाइल होता है. ठीक है, नाउ दे आर वेयरिंग दिस, टुमारो सम न्यू फैशन विल कम, देयर विल बी सम अदर बैंड दे आर फॉलोइंग, द बैंड स्टार्ट्स वेयरिंग समथिंग दैट विल कम इनटू फैशन, नाउ दे विल गो फॉर दैट. ठीक है, so that is very very volatile. ठीक है, so change in preference of the user. So if you are dealing in goods for that bracket of customers, you have to be very alert about change in preference of the user. ठीक है, तो अगर if there is something, आप old fashion कोई चलाने की कोशिश करेंगे, then there will be a time where you might have one full lot which goes unsold. ठीक है, so you have to be very very careful. Change in preference of the user, right? Another example we can give about this is Maggie. There was some earlier there was some problem with Maggie, right? कुछ ये आया था about Maggie, so people stopped buying Maggie for some time. ठीक है, तब दूसरे जो some other noodles manufacturers, उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया था. But then Maggie got cleared. Maggie has come back to the top position now. ठीक है, so anything can change the preference of the users.
right? So environmental changes, change in preference of the users, number of competitive products, ठीक है, ये बहुत important है, the number of competitive products. ये कुछ चीजों में होता है, जैसे कि आपके पेन्स होते हैं, ठीक है, if you go and ask for pens, ठीक है, कोई स्टेशनरी दुकान में आप जाएंगे, we'll have many options, most of them good actually. तो आपको कोई भी कई किस्म के पेन रहते हैं, सेलो के पेन्स होते हैं, या रेनॉल्ड्स, ओके, मैनी मैनी मैनी, ठीक है, और क्वालिटी में मोस्ट ऑफ देम आर सिमिलर, बट आप यू चूज बिकॉज ऑफ द ग्रिप विच यू लाइक, ठीक है, सम ग्रिप्स यू लाइक बेटर, तो ठीक है, तो ये चीजें होती है, ओके। इसमें आएंगे आप नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। तो इन दिस आपको कैसे मार्केटिंग करना पड़ता है कि बस दुकान वालों के पास, यानी दुकान वाले के पास अगर रेनॉल्ड्स रहेगा तो रेनॉल्ड्स बिक जाएगा, if he has cello will be sold, so you will have to give some additional incentive to the shopkeeper so that he keeps your brand, ठीक है, कि यहाँ पे ये ऐसा मार्केट है कि आपके ब्रांड को ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, they are fine with some 4 or 5 brands, whichever is available accessible they are buying that, ठीक है। so number of competitive products है, तो you will have to change your marketing style method, there are too many competitive products, okay। Last is disposable income of the consumer, ठीक है, अगर आपका डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर मींस हाउ मच इज द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। सो नाउ चलिए, इफ विल टॉक फ्रॉम द कार पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सो नाउ से Mercedes has launched one very good car, okay, very good car for 25 lakhs. It's actually, let us say, best in the bracket, right? And they are introducing this in a town, okay, where disposable income of the people, it doesn't go beyond annual, let us say annual bit more than 6 lakhs per annum, ठीक है, it's a small town, ठीक है। तो क्या ये लोग ये कार ले पाएंगे? कैन these people buy this car? Answer is no. Anyone whose average income is 5 to 6 lakhs per annum, he cannot afford 25 lakhs car. So if say Mercedes now they come here, they do heavy advertisement, इसका कोई फायदा होने वाला है? If they are doing heavy advertisement, that's waste of money, because ये तो एक खरीद ही नहीं सकता, it's beyond him, it's beyond him, okay। So which is why you have to see the disposable income of the consumer also, कि आपका प्रोडक्ट ले सकता है, आपके जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, does that consumer have enough purchasing potential? That you need to be sure about, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्स फोरकास्ट, इसमें आपको एक एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में कि क्या क्या है, ठीक है, जस्ट वन सेंटेंस एक्सप्लेनिंग इट, 1 or 2 सेंटेंस यू हैव टू राइट, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्स फोरकास्ट, ओके। अब सेल्स के बाद हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन फोरकास्ट, ओके। सेल्स फोरकास्ट में these are the factors influencing sales forecast, but what about production forecast, okay। इसके लिए सबसे पहले है, first thing is you have to see what is the demand as per the sales or marketing department, ठीक है, इसको देख के you will do production forecast. The first thing, first determinant is your sales forecast, okay। Then next thing is you will see rates of labor absenteeism, okay। आपके 100 लेबर्स है, यू विल नॉट कैलकुलेट कि 100 के बेसिस में हाउ मच आई कैन प्रोड्यूस, यू हैव टू सी अदर थिंग्स कि एब्सेंटिज्म कितना होता है, सिकनेस और लीव्स जो है पिछले बार के हिसाब से, यू शुड नो हाउ मेनी आवर्स द वर्कर्स आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर, अवेलेबिलिटी आपको देखना है, ठीक है, राइट। सो
rates of labor absenteeism, availability of materials, how much material is available. ठीक है, जो की फैक्टर हमने पढ़े हैं in marginal costing, correct? Last time, so this time again, like we will do marginal costing in cost accounting. You also have it, you all will also again have it in your CMA. Okay, so availability of materials. Okay, and key factor, like we have studied, that if some materials are not abundantly available, then you have to take that into consideration. ठीक है, contribution per unit of key factor we calculate. ठीक है, अभी इस केस में you don't need it. Availability of materials भी आपको देखना होगा. ठीक है, you have to see. Then available capacity of machines. ठीक है, so you have to see that, okay, what is your current machine capacity available. ठीक है, so वो भी they have to see. So while doing a production forecast, they have to see all these things. First, how much sales, how much they can sell. Okay, if you have a production capacity of 1000 units, but sales can sell only 500 units, then you will produce only 500 units. Okay, rates of labor absenteeism, availability of materials, available capacity of machines, maintenance schedules. Okay, when maintenance happens, that time there will be no production. That also you have to see. And delivery date. Okay, because you have to honor the delivery date also. That also you have to see. This delivery date management, it's all done with software. Okay, so all these things you have to see for production forecast. ठीक है, okay, समझ में आ गया? Fine. Can we Yes, move sir. up? Fine, sir. Yeah. चलिए, अब हम देखेंगे कि ये हमने ये देखे कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, okay, sales forecast and production forecast. Okay, we saw the factors which influence sales forecast and factors which influence production forecast. Okay, now next what we are going to see is how to forecast. ठीक है, अब हम forecast करने के इसमें आ गए. Now we will do the forecast. Which forecast? We are now talking about the sales forecast. ठीक है, आपका जो more focus of your subject is on sales forecast. Okay, so here, first of all, steps in forecasting will be determine the objective of the forecast. For example, मैम अगर हम sales की बात कर रहे हैं तो sales का कर रहे हैं. अगर आप forecasting production, जो भी object, find out the objective of forecast. ठीक है, ठीक है, ये this holds good for anything, but our focus in the problems and all is more on sales. ठीक है, determine the objective of the forecast. ठीक है, ये हो गया number 1. Fine, ये है हमारा steps in forecasting. Determine objective of the forecast. Now you have the objective. Select the period of forecast. ठीक है, long term, medium term, what forecast you are trying to do. ठीक है, once you have that, then you have to go for method of forecast. ठीक है, there are many methods of forecasting which we will see in the next section. ठीक है, so after selecting the period of forecast, choose the method of forecast. ठीक है, after method of forecast, what you will do is next, okay, gather information to be used in the forecast. Okay, तो आप क्या करेंगे कि आप you have chosen the method. अब मेथड के बाद for that method you need certain data, right? कुछ डेटा चाहिए रहेगा ना आपको, कि तभी आप फोरकास्ट करेंगे, right? Okay, you will for example you will need how many people are there in that city where you are going to sell. Okay, and how of them, okay, how many prefer this product. ठीक है, how many competitors are there, what is the what are the sales of your competitors. ठीक है, ये सारी चीजें you will need lots of data. So gather information to be used in the forecast. अब यहाँ पे information you can gather, okay, from the primary source
दैट इज फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन के लिए। ये पॉइंट इज फॉर दिस, ठीक है, फॉर पॉइंट डी। So primary source from the records of the firm itself, secondary sources from outside means published data, magazines वगैरह वगैरह, ठीक है। There are two sources you can get from primary and secondary source. Okay, ये अब now अब डेटा वेटा सब आ गया, तो अब क्या करना है, आप फोरकास्ट कीजिए लास्ट में, मेक द फोरकास्ट। ओके, so these are the steps in forecasting, ठीक है। ये भी ये पूछा जाएगा तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको, दिस यू कैन जस्ट राइट डायरेक्टली। ओके, these are the steps in forecasting, ठीक है। पहले क्या करेंगे, अब क्या ऑब्जेक्टिव है, आप प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्शन का फोरकास्ट कर रहे हो, सेल्स का, वो देखेंगे। फिर पीरियड देखेंगे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। देन चूज द मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं अब भी हम देखेंगे नीचे। ओके, देन चूज द मेथड, देन गैदर इंफॉर्मेशन, यू नीड सम इंफॉर्मेशन फॉर फोरकास्टिंग, राइट। गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, और फिर यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन मेक द फोरकास्ट। क्लियर? चलिए, यस ओके, तो मैंने यहाँ पे जो बोला आपको, select the method of the forecast, correct? So let us see the methods of forecast. Okay, सर, एक बार ये पॉइंट 4 में लिखा है ना, गैदर द इंफॉर्मेशन, उसका मतलब बता दीजिए सर। ये जो है डी जी। now gather information to be used in the forecast, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको अगर फोरकास्ट करना है, ठीक है, मुझे कुछ फोरकास्ट करना है, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा। अगर मैं ये क्या फोरकास्ट कर रहा हूँ, सपोज सेल्स का, ठीक है, सेल्स ऑफ हम्म, प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है जो है मान लीजिए सोप, ठीक है। तो फर्स्ट मैं ये बोलूंगा कि एक जिस टाउन में मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाउन का पॉपुलेशन। सर ये प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा टाइप है क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ना, ये आप किस सोर्स से उठा रहे हो वो बता रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आप ओके। पॉपुलेशन देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद आप देखोगे, चल आपका ब्यूटी सोप है, ठीक है, तो आप वुमेन, यानी ब्यूटी सोप तो मेन यूज नहीं करते, कितने वुमेन है वहाँ वो देखेंगे, ठीक है, उसका डेटा यू वांट। और इसमें से मान लीजिए आपका सोप का इस लाइक इट इज प्राइस्ड एट, लेट लेट मी से 40 रुपीज का सोप है, ठीक है, तो यू नो दैट ओनली बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल पीपल विल बाय, ठीक है। तो आप अगर सपोज ये पहचानना चाहते हो कि एनुअल इनकम ओवर 5 lakhs पर एनम इनमें से, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं इसके नीचे के लोग विल नॉट बाय 40 रुपीज का सोप, ऐसे ही कुछ, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा डेटा होना चाहिए ना, तभी तो आप फोरकास्ट करेंगे। अगर आपको पॉपुलेशन मालूम है लेकिन वुमेन मालूम नहीं, तो हाउ विल यू नो हाउ मेनी पीपल विल बाय योर सोप? ये सारा डेटा हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। अब ये डेटा आप कहाँ से ले सकते हो सकता है आपके ओन रिकॉर्ड्स में है ये डेटा, कंपनी ने बना के रखा है, तो आप इसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। और अगर मेरे पास नहीं है, मैं दूसरे मैगजीन्स या कहीं से निकाल रहा हूँ, आउटसाइड सोर्सेस से, ठीक है, आउटसाइड सोर्सेस से मैं अगर निकाल रहा हूँ ये डेटा, तो इसको सेकेंडरी बोल देंगे बस। सेकेंडरी सिर्फ कहाँ से आप ले रहे हो डेटा, secondary the primary and secondary will only tell you from the source of data. Okay, data will remain same, you want this data, population, women, annual income over 5 lakhs, ठीक है, and what are the competitors कौन है, which are the competing soaps, ठीक है, something like that, ठीक है, समझा सुमित जी? Sir, will getting feedbacks from the public will come under secondary source, sir? Feedback from the public, yeah, it will come under secondary source. Okay, sir. Okay, so these are your steps in forecasting. So now forecasting methods. Okay, now we are doing the forecast. Okay, we are seeing which method to use for forecasting. Okay, now first thing is methods or techniques of sales forecasting. That is forecasting methods. Okay, now first method we are seeing here, survey of buyer's intention or users expectation method. Okay,
So सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस, ठीक है, सर्वे करते हैं। तो पहले पहले होता था, यानी जब हम लोग छोटे थे, काफी कंपनी के लोग आते थे, ठीक है, ब्राउशर्स लेके। वो लोग बोलते थे कि जैसे आप कौन सा सोप, कौन सा सोप यूज करते हैं, तो उस सोप मैंने क्या, विच सोप, ठीक है, विच सोप एंड what quality do you like in that soap? Is it the fragrance, जो खुशबू पसंद था है कि क्या है, ठीक है, it doesn't melt too quickly, what is that you like from that soap? So they used to just come, they had a brochure, they used to write and go. Okay, so this used to happen earlier on. अभी आजकल तो ऐसा दिखता नहीं है मुझे ऐसा हो रहा है करके, but long back it used to happen, but it happens in smaller towns, smaller cities where number of people are numbered, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तो आप बायर से जाके पूछ लेते हैं सीधा। तो ऑन कलेक्टिंग दैट डेटा यू गेट टू नो, यू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट द बायर इज लुकिंग फॉर, ठीक है। यू कैन नॉट डू दैट इन अ बिग सिटी, ठीक है, उतने लोगों से कौन कलेक्ट करेगा डेटा, इजंट इट? So this used to be done. That a survey used to be made, and because now you are directly asking your customer, okay, so whatever he's saying, that will be the best possible thing, right? You will have the best possible data, right? Because there is no guesswork in it. You are directly getting it from the horse's mouth, यानी जो आपका यूजर है उसी से आप पूछ रहे हो सीधा सीधा, ठीक है। So you get the best possible data in this, but flip side of this is you can do it in a very small towns or villages. There are too many people, it is physically not possible to do this. Okay, so this is one. Second is collective opinion or Salesforce composite method. So here the people who are selling is the sales department. Okay, so you get the data from the Salesforce, because sales people are the one who are communicating with the people. तो Salesforce composite method में कौन कौन आ जाता है आपका, ठीक है। You will have first go for your salesman, ठीक है, salesman का जिसको रिपोर्ट करता है his boss, ठीक है। You will have an area manager, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा area manager. Then you will have the functional manager who is sales manager. जो भी इनकी हायरार्की रहेगी ना, this hierarchy, okay, so इन लोगों को इनसे पूछा जाता है, तो दे टॉक टुगेदर एंड दे गिव यू डेटा, बिकॉज why because these are the people who are involved with selling, because they have more data than any other department. Okay, so which is why second method is collective opinion or Salesforce composite method, ठीक है। Then third is group executive judgment or executive judgment method. Okay, here, so see, if you are launching a new product, then you cannot ask Salesforce because they have not sold that product. So they don't have that data. So only you can just go to some wise people, okay, who have seen these kind of things happen, and they can forecast based on their experience. That is possible only with people of highest level, director level people. So executive judgment में जो एकदम ऊपर के टॉप के डायरेक्टर्स होते हैं, okay, they decide on how much can be sold, okay, based on their experience, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्रुप एग्जीक्यूटिव जजमेंट, क्योंकि इसमें यही बेस्ट होता है क्योंकि यू डोंट हैव एनी पास्ट डेटा, ठीक है, तो आप और किसी से पूछ ही नहीं सकते क्योंकि आपने बेचा ही नहीं है प्रोडक्ट, करेक्ट। तो विच इज व्हाई इफ यू गो टू द डायरेक्टर्स जो पहले और किसी कंपनी में काम किए होंगे, दे वुड हैव वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज, इसका कुछ एक्सपीरियंस होगा उनको, so that they are in a better position to tell you. So go to the most experienced person, group executive judgment or executive judgment method. Okay, next is experts opinion, ठीक है। ये है अभी जैसे आप टीवी वगैरह में कई एक्सपर्ट्स आते हैं, अगर स्टॉक वगैरह इसमें आप देखेंगे CNBC and all that,
There are many experts who sit and give their opinion. ठीक है? So these experts, they give opinion either in TV or in magazines. ठीक है? So you can base your data on these experts' opinion. ठीक है? क्योंकि इनको काफी सारा एनालिसिस का नॉलेज होता है, and what they tell, at least if not 100%, but you can at least get a good amount of data from their opinion. So experts' opinion, यानी ये basically क्या है? Outside. It's outside opinion, outsiders' opinion. Okay, but outside experts, experts who are giving this kind of data to magazines, TV channels, etc. ठीक है? Okay, fine. समझा यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है? So survey of buyers' intentions. It's just go take your brochures, write. Okay, get directly from the buyers. Second is collective opinion or sales force composite. All hierarchies of sales personnel को ले लो, ठीक है, and get it from them. Then group executive judgment, directors and all will find for new products. Okay. Then experts' opinion through magazines or TV channels, some wherever experts are working. ठीक है? The next is market test method. Market test method में क्या होता है? आप क्या करते हैं? You go for your market. ठीक है? First you see what is your market. ठीक है? Okay, ये आपका मार्केट है. So इसमें से what you do is you pick up a representative sample. यानी pick up one sample which is representative of the whole. अगर ये एक sample मैंने choose किया, whatever people are there here, okay, just in the same proportions those people are there in the whole thing, whole population. ठीक है? ऐसा एक sample choose करना है आप. ठीक है? और आप यहाँ पे ये करेंगे. You try to get data from this sample. और जो भी data आपको मिलेगा ना, इसको you will generalize for the whole thing. समझ रहे ना? You'll just do it for a sample which is similar to the whole population. वहां पे आप करेंगे, आप डेटा आप कलेक्ट करेंगे फोरकास्ट का. ओके, एंड सेम थिंग को आप एक्सपैंड कर देंगे पूरे से. Expand it to the whole. Okay, understood? So this is your, just pick up a sample and just enlarge to the whole. That's all. So that is called as market test method. Okay, whenever it is test word comes, it means a sample. ये जो सर फ्री में देते हैं किसी चीज के साथ, वो जो यही तरीका होता है ना इनका टेस्ट करने का, एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री. जैसे नहीं होता है कि कभी कभी मैगजीन्स में आता है कि साथ में शैम्पू फ्री, हेयर ऑयल फ्री, छोटा सा, ये सब उसी का तरीका है. हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं वैसा कि जैसे इवन जो टेस्ट सैंपल्स जो छोटे छोटे दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी दिए जाएंगे. अब बात ऐसा है ना, ये सबको तो नहीं दे सकते, है ना? तो ऐसे एक छोटे एरिया में देंगे जहां आपको मालूम है कि इस एरिया में जो लोगों के सैलरीज है, और जैसे जैसे इवन हर हर किस्म से जो लोग यहाँ पे बसे हैं, ऐसे ही हैं पूरे कंट्री में. इस एरिया में जो है इसी तरीके से पूरे कंट्री में मिलेंगे. अब वहां उनको उनको आप बेच के देखो. जैसे आप बोल रहे हैं, आप सैंपल दे के बेचिए या किसी भी तरीके से आप उसको टेस्ट कीजिए. ठीक है? जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल सैंपल ही देना है, लेकिन उतने एरिया में से हम डेटा फाइंड आउट कर लेंगे कि इन लोगों, सपोज मैंने ठीक है, मैंने क्या किया है, ये है पूरा पूरा कंट्री. सपोज मुझे कंट्री में बेचना है. ठीक है? ठीक है, और सो आई एम डूइंग अ सैंपल सर्वे हियर. यहाँ पे मैं सर्वे कर रहा हूँ. मैं किसी भी मेथड से कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे सर्वे. तो आप जैसे आप बोले, जैसे कि छोटा छोटा जो देते हैं सैशे या स्मॉलर फ्री सैंपल्स, वैसे भी कर सकते हैं आप. ठीक है, कोई भी चीज हिसाब से आप कीजिए. यहाँ आपको पता चला कि यहाँ आपका सपोज 2% सेल हो रहा है आपका. ठीक है, यहाँ 2% सेल हो रहा है. तो आप देखेंगे ये पूरा पॉपुलेशन कितना है. पॉपुलेशन इज लेट अस से 10,000. तो इसमें सेल होगा आपका 10,000 का 2%,
यानी 2000, इस तरह से निकालेंगे। अंडरस्टूड? ओके एनी डाउट इन दिस, एनीवन? No, sir. ओके, दैट इज मार्केट टेस्ट मेथड। ठीक है, अब ये है लास्ट वाला ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, विच इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आपको यू क्रिएट अ ट्रेंड ऑफ सेल्स। ठीक है, पुराना डेटा यूज करते हैं, बेस्ड ऑन ओल्ड डेटा, पास्ट डेटा, यू फाइंड अ ट्रेंड ऑफ सेल्स। तो सेल्स किस तरह से बढ़ रहा है ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, वी कॉल इट टाइम सीरीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ओके, तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ईयर्स है आपके यहाँ, तो ईयर्स 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 जो भी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने, अब आपको यहाँ निकालना है 2006 का, मान लीजिए यहाँ पे निकालना है आपको 2005 का। ठीक है, so now you have 2001 में sales was 100, 2002 में sales was 105। ओके, ठीक है, तो 2001, 2000 में was 100, 2001 में 105, 2002 में 106, 2003 में 102। ठीक है, तो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा थोड़ा, बट ओवरऑल आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, फाइनली इफ यू से सी फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, इट विल बी गोइंग अप। ठीक है, कभी कभार बीच में कभी थोड़ा कम हो सकता है, जैसे ईयर सी 106 एंड देन यू हैव इट नेक्स्ट इज 102, दैट इज फाइन। ठीक है, तो इसके बेसिस में यू फॉर्म अ मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, यू हैव सम प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ से इतना हो रहा है, इससे इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। ओके, तो यू फॉर्म अ मैथमेटिकल रिलेशन, उस रिलेशन के बेसिस में यू कैन फोरकास्ट 2005 में कितना आएगा, 2006 में कितना आएगा, यू कैन फोरकास्ट। ठीक है, ये वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, ये हम प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। फाइन, सो इस तरह से यहाँ निकाला जाता है, तो इसको बोलते हैं टाइम सीरीज। क्यों? ये टाइम है ना, टाइम का सीरीज है, राइट, सीरीज ऑफ टाइम, इट्स कॉल्ड एज टाइम सीरीज। सो यू फिक्स अ ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन हम बना फिक्स करते हैं। ठीक है, यानी कैसा कैसा ट्रेंड जा रहा है, 100 से 105, फिर 106, फिर नीचे आ रहा है 102, 110। ओके, दैट्स कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ओके, और जिससे हम जो मेथड वट एवर वी यूज, दैट इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ, ओके, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ओके, और स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड। ठीक है, इसको ऑल्सो बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। जो लाइन हम फिक्स करते हैं ना इसमें, तो आपको यू डोंट हैव टू डू इट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या ग्राफिकली क्या होगा। ये देखिए 100, ये 100 है, 100 से 105 हो रहा है, राइट, इट इज गोइंग अप, ऐसा ऊपर जा रहा है, मैं बता सकता हूँ। फिर 106 मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट ऊपर जा रहा है। ओके, देन 102 इट विल कम डाउन। ठीक है, फिर 110। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका नाम होता है। ठीक है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जैसे मैं यहाँ ग्राफिकली दिखा रहा हूँ, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट यूजिंग मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, एक फॉर्मूला विल क्रिएट बेस्ड ऑन दिस डेटा, यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड फॉर एनी ईयर आफ्टर दिस। ओके, सो इसको बोलते हैं, इसको हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने, आप लोगों ने देखे होंगे। ओके, you would have heard of y is equals to mx plus c। ठीक है, हाई स्कूल में आपने ये देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y is equals to mx plus c, या m स्लोप होता है। सिमिलरली here we are using y is equals to a plus bx, बिल्कुल उसी पे से वो बना हुआ है। ठीक है, तो वी विल सी दिस, जब देखेंगे आपको और समझेगा। तो बेसिकली ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में यू फिक्स ट्रेंड ऑफ सेल्स।
ठीक है, सेल्स का ट्रेंड किस तरह से जा रहा है वो देख रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द नेक्स्ट वन वॉट एवर यू रिक्वायर. Fix it with the help of historical data and successive intervals of time called time series. ठीक है, use method of least square or straight line trend method. ठीक है, और जो trend which we obtain, that trend line is called as line of best fit. ठीक है, वो बेस्ट लाइन है जो हमको बता रहा है आगे ये कहाँ जाने वाला है. सो इट्स कॉल्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ये बस टेक्निकल नेम है और कुछ नहीं. ठीक है, the method we are using is method of least square method बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए तब नाउ इसके लिए एक अब हम प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का विल डू अ प्रॉब्लम. ओके, सो चलिए, व्हेन डू यू वांट योर लंच ब्रेक? कब, मतलब यू प्रेफर विच टाइम? 2 o'clock और 1:30? हम तो करके ही आए, बाकी सबसे पूछ लीजिए। ओके, बहुत जल्दी हो गया आपका लंच? आओ करके ही। भाभी जी को परेशान किया आपने जल्दी बनाने के लिए? हाँ हाँ? चलिए तो ठीक है, विल कंटिन्यू टिल 2. फाइन. फाइन सर। Okay, sir. Okay, so okay, so calculation, so we are now doing the problem for this. ठीक है, so इसमें for calculation of trend, okay, so here इसमें ये याद रखना है सबसे फर्स्ट जो है योर जो सेल्स है ना, दिस विल ऑलवेज बी वाई. ठीक है, सेल्स विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज वाई. ठीक है, और देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एन एक्स विच विल बी टाइम डिविएशन. यानी ये हो गया टाइम, टाइम का डिविएशन निकालना. डिविएशन मीन्स विल जस्ट टेक द मिड पॉइंट ऑफ द ईयर्स. ठीक है, और इससे मिड पॉइंट का कितना डिस्टेंस है that we will find out. Okay, I'll show you how we will do it. So here, okay, in least square method, सबसे first find time deviations. ठीक है, time deviations we have to find out and sum of time deviations. ठीक है, तो फिर बाद में these things, ये मैं आपको यहाँ से हम पढ़ेंगे तो we will not understand. ठीक है, अच्छा बस ये है trend line is y is equals to a plus bx. ठीक है, y is sales, x is your time deviation. ठीक है, a और b आर कॉन्स्टेंट्स. a और b वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, a और b को कैलकुलेट कर लिए तो वी ऑलवेज नो द टाइम डिविएशंस, तो हमको कोई भी y का वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y. सो आफ्टर आई शो यू द प्रॉब्लम ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम. तो इसके जो है ना, देयर आर टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड and indirect method. Okay, the direct method is followed when summation of x is equals to 0, that is time deviation is equals to 0. Okay, so इसमें हम आएंगे वापस यहाँ पे. So let's go to the problem. Okay, so first thing is from the following time series data of sale. Okay, project the sales for next 3 years. So they have given us 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and they want next 3 years. That means 8, 9 and 10, right? 2008, 2009, 2010. ठीक है, तो ये अभी हमने जैसा प्रीवियस डेटा मैंने दिखाया था, दिस इज सेम एज दैट. ओके, सेम एज दैट. दीज आर द इयर्स, दीज आर योर सेल्स इन 1000 यूनिट्स. ठीक है, यानी 80 मीन्स इट इज 80,000 लाइक दैट. So we have all these sales. ठीक है, so now what I said, sales will be y always. ठीक है, take sales as y. तो चलिए let's compute it. So computation of trend values. ठीक है,
तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। Okay, it's very, very simple. Okay, so first thing what we should do is put your years here as given in the problem. Okay, 2001 to 2007. Just I have written vertically. And how many set of data is there? That will be n. Here there are 7 years, right? So n is equals to 7. That's all. Okay. So this is first one. The second, I will explain you what is time deviation. Okay. In time deviation, how you should calculate is find the midpoint of this. What is the midpoint of years? 2004 is the midpoint. Okay. Above that there are 3 years. Below that there are 3 years. Correct. 2004 is the midpoint. So we will find time deviation from 2004. Okay. So basically what we are finding out now is what we are doing is 2001 minus 2004. Okay, that will give you this minus 3, right? 2001 minus 2004. Okay, then next is 2002 minus 2004. That will give you minus 2. Correct? Understood? 2003 minus 2004 will give you minus 1 similarly. Okay? ठीक है, 2003 minus 2004 will be minus 1. Yes, sir. फिर 0 हो जाएगा, then next will be 1 2 3. ठीक है, because we have started from midpoint, iska total will always be 0. This will always be 0. Summation x is nothing but total of this. Okay, just total of x. Add all of x. So plus 1 2 3 minus 1 2 3 will become 0. Correct, when you add it. So this will become summation x. So ये ही मैं बोल रहा था time deviation. This is what is your time deviation which we were talking about above. Okay, this is your time deviation. Okay, next is आपका sales. वैसे के वैसे ही लिख दीजिए अभी. These two जो है ना, ये और ये in red which I am showing, in red whatever I am showing, this you have to write as it is. You have not done anything in this data in the red part. Okay, the time deviation we have found out. Now next two, what we need is, okay, so next is squares of time deviation. ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्वायर्स ऑफ टाइम डेविएशन. सो यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर कीजिए. 3 स्क्वायर इज 9. करेक्ट. देन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ओके, अंडरस्टूड. सबका स्क्वायर कीजिए. यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9. ठीक है, जस्ट स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर. ओके, once you do this, add this again. ये x square, if you add all this, you'll get summation of x square. ठीक है, so when you add this, add all this, you will get 28. That is called a summation of x square. ये है summation, या सिग्मा भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, you can call it sigma or summation. ये जो symbol है, this symbol, ठीक है, we'll call it sigma or summation. ठीक है. Okay, so this is summation of x square is equals to 28. ठीक है, ये बन गया. लास्ट है आपका एक्स वाई. एक्स वाई मतलब x इंटू वाई. जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. ओके, तो बेसिकली
Okay, minus 3 into 80. Will it be minus 240? Minus 3 into 80. करके देखिए, minus 3 into 80. Yes, sir, minus 240. Minus 240. Minus 2 into 90. It is minus 180. Minus 180. Okay, same thing. Now you have to just multiply each Multiply. one of these. Minus 190. 0 will become 0. Okay, this will become 94. This will become 99 into 2, 198. 3 into 92, 276. ठीक है, इस तरह से हमारा ये निकल गया सर. Now add this. It will get summation of xy. There are some in minus, some in positive. ठीक है, total what you are getting will be 56. 56. ठीक है. Hmm? Sir, that Add. is 56. Okay, good. ठीक है, so you are getting this total. अब जो है बस यही चाहिए हमको. So now इसमें what you have to remember is, I said there are two methods, direct and indirect. Okay, you can use direct method only when summation x is equals to 0. If summation x is not equal to 0, you will use indirect method. Okay, there's not too much of difference between the two. Okay, so direct method only when summation x is equals to 0. ठीक है, तब इसमें हमने we have seen, we have to find out जो हमने the main equation which is there. Okay, see here, y is equals to a plus bx. ठीक है, क्या हमने दी ये लास्ट वाला, this y is equals to a plus bx. ठीक है, this is our main equation. Okay, इसी को यूज करना है हमको इसमें, right? It is ये same है, y is equals to mx plus c जो होता था, that's the same equation actually. Y is equals to a plus bx. A and b are constants. So a and b के value हम first calculate करेंगे. We will put in this equation. ठीक है? Say a is 2, b is 4, then we will get y is equals to 2 plus 4x. So we have to reach there. ठीक है? So y is equals to a plus bx. Now we do not know the values of a and b. Okay. So now how to calculate a and b is like this. Okay, a is average, which will be summation of y, यानी your sum of all sales upon n. Nothing but average sales, correct? It's called average. ठीक है. b जो है, b is rate of growth. You are calculating in b, you are calculating summation of xy upon x square. So ये complex है थोड़ा सा. ठीक है. Here you are just trying to find out a common trend of growth by just doing summation of xy upon x square. ठीक है, तो ये दोनों से हमको निकालना है. Now for getting these two, a and b, right? So नीचे जो हमने डेटा बनाए थे उसमें we had summation of y, we have summation of x square also, xy also. ठीक है, and we have x square नहीं है, ये भी summation of x square है. ठीक है, this is also summation, ऐसे ही है. तो अब इसको हमको अगर करना है, ठीक है, ओके, तो a और b के वैल्यूज हमको चाहिए. a इज समेशन y अपॉन n. ठीक है, समेशन y 630. ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन है हमारा. ठीक है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. ओके, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, क्या करेंगे? a is equals to summation y upon n, b is equals to summation of xy upon summation of x square. ठीक है, तो ये जो है हमने ऊपर whatever we have got, ये जो summation y, इसको यहाँ y में डाल दीजिए. This is y, right? This becomes 630. ठीक है, ये n है ये. ठीक है, n is this,
n को यहाँ डाल देंगे. ओके 7 फाइन. 630 अपॉन 7 हो गया. दैट विल गिव यू 90. सेकेंड इज समेशन एक्स वाई विच इज हियर 56. ठीक है. Summation xy is 56. Just put it here. And summation of x square. Okay. You can also call it sigma x square, sigma xy. Okay. Is equals to 28 यहाँ डाल दीजिए. 58 56 upon 28 is 2. ये इतना समझ में आ गया? How I got this 90 and 2? Anyone has any doubt in this? How I got 90 and 2? No, sir, not any doubt. Okay. थोड़ा सा है 100%. दोबारा वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा. हाँ अभी अभी और प्रॉब्लम्स करेंगे इसी ऐसी के और प्रॉब्लम्स करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अभी टोटल 4 प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसके. दिस इज द फर्स्ट वन. ओके सो ये है. तो यहाँ पे मैं एक्चुअली आई जस्ट रिपीट दिस इफ यू वांट वंस. व्हाट वी डिड इज फर्स्ट थिंग इज दिस टेबल. वंस यू नो दिस टेबल, ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा. तो टेबल में सबसे पहले हमने क्या लिए, प्रॉब्लम में हमको ये दिया था. ओके प्रॉब्लम में दे हैव गिवन अस दिस. सो दिस इज आवर y. सॉरी दिस इज x. ठीक है. ये है, ये years है. ठीक है, ये years है. x विल बी टाइम डेविएशन. ठीक है. सो दीज आर years. ईयर में डाल देंगे इसको. एंड सेल्स इज y. ठीक है. ओके ये तो हो गया. तब ये हम जा रहे हैं टेबल में, इसको डाल देंगे. ठीक है. तो वी पुट these years. I have put here. Okay. Years I have put here. और sales that is y I have put here. ठीक है. और इसको इसको ऐड कर दीजिए. जस्ट ऐड दिस. You will get 630 here. Okay. Fine. अभी now next is time deviation में क्या करना है. Just pick the middle point. Okay. तो यहाँ मिड पॉइंट से डेविएशंस निकालेंगे. दैट वुड मीन अब क्या कर रहे हैं, 2001 माइनस 2004 इज दैट इज गिविंग यू -3. ये फर्स्ट वाला. ओके सिमिलरली यू हैव टू डू 2002 माइनस 2004. यू विल गेट -2. ओके बस यही करते जाना है सेम. You'll get then -1, then 0. 2004 minus 2004 is 0. 2005 minus 2004 is 1. Like that, ये मिल जाएगा. Summation of this will be 0. ठीक है. If it is 0, you can use direct method. ठीक है. Summation of x is equals to 0 और sigma x is equals to 0. Right? So ये हो गया. So the next two जो है ये हमको बनाना है हमारे फॉर्म, हमारे इसके लिए. For our formulae, we have to prepare these two things. तो पहला वाला is x square. So ये जो है x इसका स्क्वायर कीजिए. Square will be 9. Okay. Then 2 square will be 4. Like that. सारे इसको स्क्वायर करके यहाँ लिखते जाइए. Okay. And add it, you will get 28. Okay. Then last is for x, y. Just multiply x into y. ठीक है. This is x, this is y. X into y you have to do. X into y will give you this answer. Okay. You can do it in the calculator if you want. ठीक है. इस तरह से सारे करने हैं आपको x into y. And then just add these. ये सारे add कर लीजिए. Add it, you will get 56. Clear? Yes. So then ये होने के बाद अब दो फॉर्मूले हैं आपके. ठीक है. ये हमेशा रहेंगे. These two, one is like regression equation is y is equals to a plus bx. This is the same for direct and indirect method.
y is equals to a plus bx. फाइन, इसको आप इसको तो ऐसे यूज करेंगे. इन y is equals to a plus bx we need the values of a and b. okay, for that you have got two formula always fixed. ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मूले, कुछ नहीं करना है. फर्स्ट इज summation y upon n. okay, summation y upon n. summation y is already calculated here, तो इसको इसमें रिप्लेस करेंगे. ठीक है, it will become 630. okay, upon n is 7, n तो आपको मालूम ही है, it is 7. 630 upon 7 90 आ जाएगा. ओके, क्लियर या यहाँ तक? देन लास्ट इज b का वैल्यू summation xy upon x square, which were in the last two columns which we created. So xy is 56 here. okay, and x square is 28 here. just put it, बस डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा. So you've got the answers of a and b. तो a को यहाँ डालिए, put a here. y is equals to 90 plus b is 2. 90 plus 2x. ठीक है, can I say that I have now got the equation y is equals to 90 plus 2x? Any doubt, anyone? Can I say that I have now got the equation y is equals to 90 plus 2x? Anyone has any doubt can ask me. 90 तो सर समझ में आ गया, वो एक का जो निकला वो 90 डाल दिया, वो b एक के जगह 2x, a का जो वैल्यू निकला ना 90, अब नीचे जो लिखा हुआ है a का 90 है. ठीक है, और जो ठीक है, b है, b का 2 यहाँ निकाले थे ठीक है, हमने. ठीक है, नीचे ठीक है, आ गया सर, आ ठीक गया है. ना, 90 plus 2x. ओके, सो चलिए अब इससे आगे अब हमको बस ये बन गया ना आपके y is equals to 90 plus 2x. From here you have just as good as you have got the answer. okay, as good as you got the answer now. y is equals to 90 plus 2x. so इस अब क्या करेंगे, ये जो x क्या है बताइए, हमारा टाइम डिविएशन. करेक्ट, x is टाइम डिविएशन. so 2007 का if it is 3, 2008 का कितना होगा? now 2008 4 का भी होगा, ऐसे 4 होगा. तो ये भी ऐसे निकालेंगे, 2008 minus 2004. करेक्ट, यहाँ से जैसे निकालते थे, आगे का भी जी इट विल बी द सेम. जी, दिस विल आल्सो बी 2008 minus 2004. 4 आ गया. 4 आ गया. करेक्ट, और तो उसके बाद वाले ईयर का 5 आएगा, उसके बाद वाले ईयर का 6 आएगा. करेक्ट, तो 8 9 10 का क्या आएगा? 4 5 6. क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट? डोंट वरी, जस्ट आस्क मी. ओके, यस सर. किसी को भी एनीवन हैज डाउट? एनीवन? मधु अंडरस्टूड? Yeah, sir. मनोज? Yes, sir. अच्छा, प्रियंका अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. Okay, so now 2008 9 and 10 is 4 4 5 and 6. okay, बस 4 5 and 6 का वैल्यू यहाँ डाल देंगे ना ये x में, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा. दैट्स ऑल. so this is 2000, यहाँ पे सेम इक्वेशन में y for 2008 is 90 plus 2 into 4. इस 4 5 and 6 ही हम वैल्यू डाल रहे हैं बस यहाँ पे द सेम इक्वेशन. ये x का जो वैल्यू है ना, x का वैल्यू इज 4, एक में 5, एक में 6. then you can just multiply and get the value of y. so 90 plus 2 into 4 is equal to 90 plus 8 will be 98. and brackets में if you want you can put thousands, ये data is in thousands. ठीक है, इस तरह से हमने अगले 3 ईयर का we have forecasted. understood? ठीक है, ये आंसर्स है आपके 98 99 102. यानी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, I can just say that
यहाँ से इफ आई इंक्रीज इट, ठीक है, दिस विल बी 98, दिस विल बी 99, ठीक है, ठीक है, 99, क्या था इसका, नहीं सॉरी, 98, 100 and 102, ओके। ठीक है, दिस इज 98, दिस इज 100, दिस इज 102, ये हमने निकाला है, ये दिस वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। सर इसमें एक फॉर्मूला जो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला, तो वो एज इट इज रहेगा या फिर आगे किसी क्वेश्चंस में चेंज होता है? वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा ना? हाँ, every in every problem it will remain the same, y is equals to a plus bx, सर हाँ, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बोलेगा क्या? क्या क्या बोलेगा? क्वेश्चन जो बन एग्जामिनेशन में मिलेगा तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड बोलेगा क्या कि किस मेथड से वो मिलेगा? वो मे बी ना भी बोले, आपको यही हम्म। चेक करना पड़ेगा कि ये समेशन x जीरो है कि नहीं है, वो देख के आपको यदि करना यदि पड़ेगा। यदि सिग्मा एक्स जीरो आ गया तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, सिग्मा एक्स जीरो नहीं आया तो सर हम इनडायरेक्ट लगाएंगे। इनडायरेक्ट लगाएंगे, बिल्कुल, ओके। ठीक है। Sir, सर ये यस यस मधु। sir, if the years has been, you said it's been odd number, so we have taken the middle value, sir. If it's even number means what we should do, sir? We will see that in the next problem, okay। Okay. हाँ, और एनी सर अदर क्वेश्चन? सर ये मनोज जी जो बोले अभी, हाँ, ये जो कि अगर वो सिग्मा एक्स अगर जीरो नहीं आएगा तो वो वाला नहीं कंसेप्ट हम समझे, वो किस हिसाब से बोले? ये जो है, ये यहाँ पे टाइम डिविएशन है ना हमारा, ठीक है। जी ये जी इसका टोटल यहाँ पे जीरो आया है ना। जी जी। ये जब जीरो आएगा आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है ना, अभी जो दो फॉर्मूला बताया मैंने, यू हैव टू यूज दैट, ठीक है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम में होगा जब वो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। उसमें बस ये दो फॉर्मूले जो है ना, इसके जगह दूसरे दो फॉर्मूले रहेंगे बस, ये इसी इसी डिफरेंट इसी फॉर्मूले फॉर दिस, दैट्स ऑल। इसी सम में हो जाएगा सर। इस सम में कैसे होगा, यदि हम 2007 को उड़ा देंगे तो ऑटोमेटिक वो जीरो नहीं आएगा सर, बिकॉज क्योंकि मिडिल उसके पास रहेगा ही नहीं। हाँ नहीं, इस सम में तो आपका जीरो आ रहा है ना, इस सम में तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे डेट की 2007 को मैं हटा दूं, 2007 में 1 ईयर हटा दूं। आप सम ऊपर चलिए सर, ऊपर थोड़ा चलिए। हाँ Sir, it हाँ, means that the n has came odd number, na? If it will be even, then there will be no zero. Number या of years. इफ Yeah. नो देन, ये जो है ना, इफ Sir, n is 6. even, if n is Yeah. even, for that I will show you one problem, Yeah. ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट विल बी सीइंग इफ n is even तो क्या करना है, ठीक है। if n is 6 क्या करेंगे, वो हम देखेंगे दूसरे प्रॉब्लम, ओके। ओके। और कुछ मनोज जी? ये सर बाकी जो इसमें है, आपने जो सर इसका बोला कि फोरकास्टेड का जो मेथड है हम लगाएंगे सर, जैसे 3-4 फोरकास्टेड का मेथड बताएं, तो बाकी सर ये थ्योरेटिकल ही रहेगा, प्रैक्टिकल में सिर्फ यही ट्रेंड वाला ही रहेगा, बाकी सब थ्योरेटिकल ही है। जैसे ग्रुप का बोला सर, एक्सपर्ट ओपिनियन बोला, मार्केट टेस्ट मेथड बोला, हाँ ये हाँ सब हाँ, सब वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल ही है बाकी ना? सब थ्योरेटिकल है, हाँ, थ्योरेटिकल है, वो बाकी सब जब थ्योरेटिकल। जहाँ ये पर वो ये साइंटिफिक और यहाँ पर हमको मेथड लगाना है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही लगेगा सर, ट्रेंड में। हाँ, अच्छा, ओके करेक्ट। तो इसका सिर्फ जो आपका जो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ना, इसी सर। यही प्रैक्टिकल है बस, ओके सर, ओके ठीक। फोरकास्टिंग मेथड्स। दूसरे प्रॉब्लम्स हैं आगे जो रहेंगे आपके, बट फोरकास्टिंग में बस यही है, ठीक है। तो इसके जो है हम चार टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे, ये फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है।
Shall we move to the next problem now? So we'll move to the next problem now. Okay. Now in this, see what is said is, with the help of following data, project the trend of sales for the next 5 years. ठीक है, next 5 years का प्रोजेक्ट करने बोल रहा है. That is 2003, 4, 5, 6, 7. Next 5 years will be what? 2008, 2009, 2010, ठीक है, 2011 and 2012. Correct? ये next 5 years he is asking us. Okay. So now we have got what? Sales we have got. So this is Y. Okay. And years we have got. And as you can see, it is an even number here. Okay. So if you get an even number, what you have to do, we will see. ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रॉब्लम बिल्कुल सेम एज अबव है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, ओनली डिफरेंस इज दिस इज इवन नंबर. नाउ सॉल्यूशन नेक्स्ट इज, चलिए इसको हम पहले डेटा को वैसे ही डालेंगे जैसे हम पहले डालते थे. ठीक है, सो जस्ट पुट ईयर. ओके, ईयर एज इट इज, n is equals to 6. Okay, all 6 years. Now sales Y, I'll put as it is, summation of Y is 720. Now we will see time deviation. ठीक है, now time deviation में what you have to do is, ठीक है, pick the midpoint of this, which will be 2004.5. correct? Midpoint will be 2004.5. ठीक है, अगर मैं 2004.5 यहाँ पे लेता हूँ, I take 2004.5 and I do 2000, ठीक है, okay, so I'm taking 2004.5, 2002 minus 2004.5 कितना आएगा? -2.5. ठीक है, 2003 minus 2004.5 will be how much? -1.5. ठीक है, this will be how much? -0.5. this will be 0.5. ठीक है, this will be 1.5 and this will be 2.5. ठीक है, तो ये जो आप निकालते हो ना, जब भी मिड पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो डेसिमल्स है, ओके, इट्स बेटर टू शो इट इन होल नंबर्स. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, आप ऐसे भी अगर करोगे, इफ यू डू इट लाइक दिस, देयर विल बी अ माइनर चेंज इन आंसर. ठीक है, सी फोरकास्टिंग क्या है? इट इज forecasting is not an exact number. ठीक है ना, forecasting is, you are just showing that the future can be like this. ठीक है, so if you are saying that your forecast is जैसे previous problem में we have calculated 3 forecasts. When the actuals come, the actuals will not be exactly equal to the forecast. Correct? It will be closer to the forecast. तो इसीलिए forecasting में कोई exact answer नहीं होता कभी. Okay, there's nothing like an exact answer. You have to be closer to the actuals. ठीक है, तो even if you do it like this, ठीक है, तो क्या होगा आपका? ये आंसर विल बी क्लोज. इट विल नॉट बी सेम बट इट विल बी क्लोजर. ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है? बेस्ट जस्ट गो बाय द मेथड मेंशन्ड इन द स्टडी मटेरियल. इसको आप डबल कर लीजिए बस. ठीक है, डबल करने का मतलब ये है, यू आर अज्यूमिंग 6 months एज 1. 6 months को एक यूनिट मान लीजिए. ठीक है, every 6 months. Why you are doing it? Just to remove the decimals. ठीक है, ओके, जस्ट डेसिमल को रिमूव करने के लिए आप ये कर रहे हैं. ठीक है, और ये भी किया जाए तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है. डायरेक्टली इफ यू यूज लाइक दिस, मिड पॉइंट यूज करके आप कर रहे हैं, टेक्निकली इट इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, लेकिन वी विल गो बाय द बुक मेथड, जिसमें यू जस्ट टेक 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और आप बस डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं. 2004.5 जहाँ आ रहा है ना, 0.5 विल बिकम 1. हर 0.5 को आप 1 मानो. ठीक है,
तो ये 2.5 विल बिकम -5, 1.5 विल बिकम 3, ये विल कम 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप करोगे, तो इसमें बस क्या करना है, ऐसे आपको कैलकुलेट करने के लिए जस्ट डू इट लाइक दिस, जो आपको आपके ईज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो है लिखना नहीं है इसको। ठीक है, जस्ट सी 2004.5 रफ में आप लिख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे में कभी गलती नहीं होगा आपका। टेक दिस रफ में, जस्ट राइट दिस, ये जो साइड में मैंने लिखा है। ठीक है, रफ में लिख लेना है, बस इसको डबल करते जाइए और यहाँ लिख दीजिए। सो दिस विल बिकम योर फॉर 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, ये आपका रहेगा फॉर 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, 6 महीने को 1 यूनिट मान के आप चल रहे हो। ओके, इसीलिए 2.5 months इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। इसको आप डबल करके ऐसे लिख देंगे, इट विल बी इजियर फॉर। ठीक है, रफ में ये लिख लेना पहले ऐसे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट राइट दिस फर्स्ट। ये तो लॉजिकली आपको समझ में आ गया, यू आर टेकिंग मिड पॉइंट हियर, करेक्ट? ये मिड पॉइंट हम ले रहे हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, इजंट इट? सो जस्ट राइट दिस और इसको बस डबल करके आप लिख देना है, सो देन योर x विल बिकम 0। यहाँ पे भी x इज 0। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो यू कैन गो होम एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर दिस। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा क्योंकि देन इन द एंड यू आर डूइंग दैट एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यूज चेंज करोगे तो इट विल नॉट कम एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, क्योंकि ये पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, एक्स को स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स वाई कर रहे हैं, राइट? इसीलिए इसमें और इसमें आपका वैल्यू सेम नहीं आएगा। ठीक है, बट इट विल बी क्लोज। ओके, क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, तो बस यही करना करना है आपको। सो बेसिकली इजिएस्ट वे इज डू लाइक दिस, रफ में जाके आप इसको पहले ये लिख लीजिए, इसको डबल करके यहाँ लिख लीजिए एज 6 months 1 यूनिट। और इफ यू कैन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसको आप कर लीजिए 2004.5 माइनस 2002 इज 2.5 इंटू 2 करके यहाँ लिख लीजिए सीधा डायरेक्टली। 1.5 आता है इसका, इंटू 2 माइनस 3, लाइक दैट यू कैन राइट। ठीक है, Yes, sir. So it means that when there is even number, then we will do the averaging. yes, if it is even number, you are just removing the decimal, actually you are doing same what you did before. ठीक है, so if say Yes, sir. had we followed this, then you are doing exactly the same, right? So here you are doubling it up, so basically you are just removing the decimals. ठीक है, So that understood. I mean, just that here is the n is equals to 6 means we have to do averaging of the middle period, that is 2004 and 5 only. averaging what? Sir, year averaging, that is n 2004.5 that you have written. हाँ, yeah, correct, yes. Mid, to find the midpoint, I'm averaging 2004 and 2005. Yeah. Okay, sir. Okay, fine. So till here now we have come. So here see, तो यहाँ तक आप लोग को समझ गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम डिविएशन। ओके, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो टिल हियर आपको समझ गया। बस पिछले और ये प्रॉब्लम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो मैंने डिफरेंस आ रहा है मेरे को डेसिमल्स में था, ये सारा मैंने डबल अप करके लिख रहा हूँ। ओके, एंड 6.5 इज इक्वल्स टू 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, y हमारा ऑलरेडी हो गया, अब सब कुछ आ गया है, नाउ सेम एज द अर्लियर प्रॉब्लम यहाँ। ठीक है, नाउ आप इसको निकाल देंगे। नाउ दिस इज सेम एज द अर्लियर प्रॉब्लम, और समेशन x इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट मेथड विल यूज, और यहाँ x स्क्वायर कीजिए। ओके, जस्ट स्क्वायर दिस, -5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर -1, बस ऐसे ही करते जाइए, यू विल गेट ऑल स्क्वायर, एड इट, यू विल गेट समेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 और सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70। ठीक है,
सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 70 और समेशन एक्स स्क्वायर जो भी बोलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट समेशन एक्स वाई, एक्स वाई पूरा निकालेंगे एंड ऐड इट। सो -5 इंटू 25, सॉरी सर, -5 इंटू 100, ठीक है, -500। नेक्स्ट इज -3 into 110, get -330, ठीक है, and this into this, you get this, ठीक है। सारे ऐसे ही करके add it, you will get 28, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल यहाँ से तो पूरा सेम ही कर रहे हैं, ठीक है, there is no change from here onwards, only the way we computed x is different, after that fully same, okay। So now regression equation of y on x equals to a plus bx, ठीक है। अब a और b का फिर से वही लिखेंगे, ओके। a is equals to summation y upon n, ठीक है। you have to remember this formula, okay। summation y is 720 upon 6 is n, ठीक है, हो गया 120, ठीक है। समेशन एक्स वाई लास्ट वाला कितना है, 1, दिस इज 28, करेक्ट। ये 28 को, और दिस इज 70, so 28 upon 70, okay, okay, 28 actually 280 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे ना, 280, ठीक है। दिस इज 280, 280 upon 70, ठीक है। यहाँ पे 280 upon 70 कर दिए, यू गॉट 4। तो क्या हो गया अभी, नाउ y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 4x, ठीक है, करेक्ट। Yes, sir. अब हमको, चलिए ये बन गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन, ओके। दिस इज अवर रिग्रेशन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 4x। अब नेक्स्ट 5 का आप लोग मेरे को आंसर निकाल के बताइए, नेक्स्ट 5 इयर्स का। Yes, Okay, sir. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. So 2008, it's 148. 2008 is equals to, 148 okay, so you multiplied by what, 7? by 7. Very good, okay. 2009, So 1 minute. So 156. okay. Next, So 2010, it is, sir, 164. very good. Next, कीजिए आप लोग भी, बाकी सब। सर अब वो आप पहले लिखवाए थे ना, बोला पॉइंट वाला, 172. हम उसी पे बना दिए। अच्छा उसी पे बना रहे थे, कोई बात नहीं। अच्छा, 172, And Last sir, is- last it is, 180, yes, sir, 180. ठीक है। So that is all in lakh value. Yes, 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 all in lakhs. Okay, so here, तो यहाँ पे क्या किया हमने, बस इतना ही करना है। जब लास्ट में हमने, इन लास्ट प्रॉब्लम व्हाट वी डिड, आफ्टर 5 we took 6, correct, but here because The difference is 2, sir. 2, That's why we are taking 7. yeah, so this 2006 is 3 here, 7 is 5, so after that Yes, it will be sir. 7, 9, 11, 13 and 15. 13, ठीक है। so that's what you will use for multiplying now, ठीक है। Yes, sir. ये देखेंगे यहाँ, so you have to use इट this मींस for, टाइम डेविएशन 2 हो जाएगा ना।
टाइम डेविएशन 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब 2 का फर्क आ रहा है ना बार बार। हाँ हाँ करेक्ट। तो इसीलिए ये 7 के बाद 9 आएगा, देन 11 आएगा, देन 13, देन 15। हर एक 6 महीना को एक पकड़ना है, यानी 6 महीने साल को का 2। एक पकड़ना है। तो साल को 2 पकड़ना। क्यों? वही क्योंकि वही इसमें आप यहाँ देखेंगे ना, तो आपको कुछ कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं। ये देखिए, सी ईयर, यही हम ये इसी में बना लेना है अपने को। ठीक है, 5 का 1 है, 6 का 3 है, 7 का 5 है, तो फिर नेक्स्ट होगा 7, फिर 9, 11 ऐसा। यहीं के लिख लीजिए, यही आपका इजी हो जाएगा। इसमें क्या है सर, ऊपर में जो मिडिल नंबर डालेंगे ईयर का, तो 2004 डालेंगे और 2005 डालेंगे, ठीक है? नहीं, मिडिल नंबर जो है, आ, 2004। आप डालोगे ऐसे, मतलब इसको बोलेंगे हम्म। अज्यूमिंग 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हम्म। इसको ऐसे ही लिखेंगे, बिटवीन 2004 एंड 2005। हम्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रॉम years between 2004 एंड 2005, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे अज्यूमिंग 6 months इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, बस। तो बिटवीन इस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा ना, 2004 हम्म, एंड 2005, या हम्म, 2004.5। यहाँ पे लिख इसलिए 2004 इसलिए पॉइंट। इसलिए सर, जब ऊपर से हम्म, स्टार्ट करेंगे माइनस में लाना, तो 4 से पकड़ेंगे तो सर 2 2 ईयर आ जाएगा, तो लास्ट का 1 ईयर 5 हो जाएगा। और नीचे से पकड़ेंगे तो 5 से करेंगे सर। हम्म, हम्म। हुआ ना सर, ये 2002 हुआ और 2004 हुआ, तो वो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? कितना? 2002 में है, तो 2002 में सर 2 2 साल 2 हो गया, हम्म, 6 6 महीना हो गया। 2003 में हो गया 6 6 महीना, तो 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। और हम्म, 2004 का 1 लेंगे, क्योंकि मिडिल है तो 1 लेंगे, तो 5 हो गया। करेक्ट। तो ऊपर में -5 हो गया। हम्म, नीचे में आ जाएंगे सर, तो नीचे में 2005 से पकड़ेंगे, 4 से नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 5 का मिडिल ले रहा है, तो 2005 7 का बीच का दूरी सर। तो हो गया हम्म, 2 साल, 2 4 साल, और 5 का आधा पकड़ेंगे, तो नीचे का 5 साल। हम्म, ऐसे हो गया सर, 4 5 का। और नहीं हम्म, तो ट्रेंड 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 में यही होता है, जो ट्रेंड ऊपर रहेगा माइनस में, वही ट्रेंड प्लस में आ जाएगा नीचे। हम्म, राइट सर? राइट। ओके। समझ में आ गया आपको ये यस। प्रॉब्लम? हम्म। सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Sir, Yes, sir. यस, मधु? sir, if this type of question asked in the exam, can we write that assuming 6 months as a 1 unit? Yeah, you will write like this. Whatever is written in the solution, you will write like this. Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पे जो है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिविएशन इन सेल्स, एक्स एंड वाई, एक्स इज टाइम डिविएशन, वाई इज सेल्स। ठीक है, सी इफ यू डू नॉट हैव द टाइम, डोंट नीड टू राइट दिस, जस्ट राइट एक्स वाई डायरेक्टली। ठीक है, टाइम परमिटिंग रहता है बहुत सारी चीजें, जितना हाउ मच डिटेलिंग यू कैन गिव, जस्ट बेस इट ऑन टाइम अवेलेबल। Writing these tables and all consumes lots of time actually. So here, like again, you can, instead of writing time deviations from the year between, okay, you can just write time deviation between 2004 and 2005. It will all save time. सर फॉर्मेट तो इसी फॉर्मेट में बनाना है, फॉर्मेट तो चेंज हाँ, नहीं होगा। इसी फॉर्मेट। सेम एक्स वाई एक्स इसी तरह बिठाना है। हाँ, ऐसे ऐसे बैठाना है। जो आप ऊपर लिख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सर बहुत आप कम लिख सकते हो, दैट्स सर ओके। और फार्मूला जो है सर, उसको घोर के पी जाना है। हाँ, फॉर्मूला तो बिल्कुल उसमें आपको पूरा घोट के पी जाना है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, so fine. So these two problems are over. So I'll give you a dinner lunch break now. Okay, I'll give you a lunch break. We will come back. mm, Say 2:30. 2:30. Okay, good. 2:30. Okay, sir. Right. And if you stretch a bit, it's okay for all of you, or any any other schedule at
3 o'clock? No, I sir, mean, no. five Some other schedule I have. 2:30, sir. Huh? 2:30. So 3 o'clock will be okay to over the class, or it will be a little bit late. 3 o'clock is okay, right? Okay, fine. Yes. Okay. So, chalo, back at 3 to 2:30. We'll finish those two problems. Okay, sir.
Okay, so we'll continue. Next is illustration 3. An investigation into the demand for color TV sets in 5 towns has resulted in the following information. Okay. So population of the town in lakhs, they've given us X. Okay. They've already given X in this problem. This is the time deviation. Okay. So actually this should be population deviation which they have given us. Okay. This is X. Now, as you can see, all X are positive here. So summation of X cannot be 0. Here itself we can tell, correct? Yes, sir. So X is this, they have given, and number of TV sets demand, which is Y always, okay, which will be this. With a linear regression of Y on X and estimate the demand for color TV sets for 2 towns with a population of 10 and 20 lakhs. So basically, what they are asking is, okay, after this 10 lakhs and 20 lakhs. For these two, we have to find the demand. Okay, so same thing now, we'll just arrange X as given, as they have given in the problem, just put it. Okay. And take your summation of X. Okay. And N is 5. And this color TV, which is Y, which is given, summation of Y is equals to 67. Okay. Total of this is 67. So these two we have taken directly from the problem. These two we have taken directly from the problem here. Okay. Now let's go for X square and XY. Okay. So X square, just square everything. 5 square 25, 7 square 49. Okay. And we'll add these to get summation of X square. Right. And then X into Y. This into this. 5 9s are 45. Okay. 13 7s are 91. Like that. Just add the multiply this and this. You will get this XY. Add it, you will get summation XY is equals to 655. Okay. So now here X is not equal to 0. So you cannot use the direct method. Regression equation will remain the same. Okay. Y is equals to A plus BX. But here, to find the value of A and B, you have to solve 2 equations. Okay. So basically, you will have to use 2 equations and solve it to get the values of A and B. This is your indirect method. Okay. So here, what are the 2 equations? One is summation Y is equals to NA plus B summation X. Second is summation XY is equals to summation X plus summation X square. So all of these in this equation will come once. Okay, summation Y will come once. Summation X will come once. Summation of XY will come once. And summation of X square will come once. Okay, summation X is coming twice here. Okay. Summation X is coming twice. Okay. So you'll have to learn these 2 equations. After having these equations, we'll just put whatever values we have. So here, X value you can put here and here. Okay. Y value will put here, 67. X square will put here. XY we will put here. Okay. Then you'll get 2 equations which will have A and B. Okay. And N we already know is 5. Okay.
So we'll solve these two simultaneous equations, we'll get the value of A and B. Okay, that's the only difference in this. So if we put everything, you can see here, y is 47, sorry, 67. 67 is equals to 5 is n. So that's why we put it. 67 is y and 5 is n, 5a plus b x. X is 45. Okay, so 45b. Okay. Second one is summation xy is 655 is equals to 45a, x is 45, summation x, plus 455b. X square is 455. Okay, just put the values, that's all. In 3 and 4, these are equations 1 and 2. Put the values, you'll get equations 3 and 4. Now you have to solve these two simultaneous equations. So if you know it, it's well and good. Otherwise, it is quite easy. Just you have to take either A or B, and the two coefficients should match. So So here the values of A and B are not given. So by equation method, we have to find the value of A and B. yeah, by this method, you have to find the value of A and B. Okay. So this is 45 and say this is 5 here. Okay. So multiply equation 3 by 9, you will get 45. So you'll have to, two things, we have to make it equal, right? Either it can be A, it can be B. So whichever is smaller, just pick that. So that's why now if you multiply it by 9 here, equation A, so because if you multiply by one number, both sides of the equation, value of the equation doesn't change. Okay. That is, the equality doesn't change if you multiply both sides with the same number. Okay. If you multiply by 9, this will become 67 into 9, which will be 603 is equals to 9 5 is 45 plus 9 into 45 is equals to 405. 9 into 45, 405. Okay. So this equation we have got in place of equation 3 now, which is equation 5. Now bring these two together, this one and this one. Okay, and you have to deduct one equation from the other. If you deduct it, what will happen? 45a minus 45a will become 0. So a will go off, you will have only one variable and you will find the answer. Okay, so which is why deduct equation 5 from equation 4. So you can actually deduct any equation from any equation, that's not a problem. Okay, but just if you take the higher number equation, this is 655, this is 603. Okay, so always do 4 minus 5. So you'll get positive answers. That's it. Even if you get negative answers in both sides, you will eventually get the same value. Negative minus minus, it will get cut and you'll get the same value. So don't worry about which equation to deduct from which equation. Okay. Normally just pick the higher one and deduct the lower one. That will just make it simpler. That's all. So 655 minus 603 gives us 652. Correct? Sorry, it gives us 52. 655 minus 603 gives us 52. Right? And this side, this will get cut. This will get cut. Okay. And here we get 55. 455 minus 405 is 50. 50b. That's why we got 50b. Okay. Understood? This is how we got 52 is equals to 50b. B is equals to 52 upon 50. 1.04. Okay. Now you got B. Put the value of B in any of these equations. You'll get the value of A. Okay. In any of these equations, you can put the value of B. Okay. So
you will get A. This is for B. Okay, here putting the value in equation 3. So basically you can put in any equation, okay, any equation with value, but go for smaller numbers, so you will not have to compute too much. Okay, here the values are big, so we went for this. 67 is equals to 5A plus 45B. 5A plus 45 into B is 1.04. Okay, to solve this, you will get the 45 into 1.04 gives us 46.8. Okay, so this is 5A plus 46.8. 5A is equals to 67 minus 46.8. Okay, 20.2 here. Okay, 5A is 20.2, so A is 4.0. Okay, so we got the value of A and B in this. So what we'll do, just put it in the put it in our main equation. Y is equals to 4.04 plus 1.04 x. Okay, so now x values of x are there already. They wanted 10 and 20, correct? 10 and 20 is what they had asked for. Just put it directly, 10 and 20. So 4.04 plus 1.04 into 10, you will get 14.44. Okay, and second one, just put 20. Fine. So you will get 24.84 thousand TB sets. Right? So that is your answer here. Okay. So if you get indirect method, the thing is, you will have to just solve these two equations, but then other answers will be straightforward. Okay. So this is your first problem of indirect method. Okay, understood? Yes, sir. चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं ऑफ इनडायरेक्ट मेथड. Okay, sir. Illustration 4. So here, investigation into use of scooters in 5 towns. Okay, so these are number of scooters Y and population in 10. Population in town. Okay, so these are population in lakhs and use of scooters. Okay, so how many time the towns, and this is the demand for scooters. Okay, and we have to fit a linear equation, and they are asking only one town which is there's a population of 16 lakhs in this. Okay, so that is here, just put 16. This is the answer we want. Okay, so we'll again here itself you can see that this cannot be 0. X is x and y they have given. You don't have to do anything, just take it as x and y directly. Okay, so this is not, this cannot be equal to 0. Everything is positive, right? क्योंकि सारा पॉजिटिव है, ये 0 हो नहीं सकता है ना, इसीलिए यहाँ हमको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा. तो चलिए अभी इसको करते हैं, ये x और y डाल लेंगे इसमें. यहाँ हमारा x आ गया. ठीक है, n अपना 5 है, समेशन x निकाल लीजिए. y डाल देंगे यहाँ, समेशन y, देन स्क्वायर्स ऑफ पॉपुलेशन, इसके स्क्वायर्स निकालेंगे. Okay, and we'll put it here, squares of these are here. Okay, 4 is 16. ठीक है, 4 is 4 square 16, 6 square 36 and so on. ठीक है, and summation x square is ये product of x and y, xy 4 into this. Okay, x into y will give you this. Same thing for others. This into this gives you
दिस, ठीक है, समेशन एक्स वाई भी मिल गया, ठीक है। सो नाउ वी विल यूज इनडायरेक्ट मेथड इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन विल बी सेम, okay, y is equals to a plus bx, and our two equations are y is equals to na plus b summation x, okay. So y summation y is equals to na plus b summation x y is equals to a summation x plus b summation x square. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये the formula, okay, you'll have to remember this. So अब इसमें put our values, यहाँ ऊपर जो values है हमारे पास, plus n is equals to 5, put all these values, ठीक है, put these values, we will get this, ठीक है, 35,000 is equals to 5a plus 4b, इसमें आ जाता है, क्योंकि y is equals to, if you want to check once, y is equals to 35,000, n is 5, summation x is 40, ठीक है. Similarly this one, ओके, दोनों डाल दिए, और इसमें भी वैसे ही है, 5 है, ये 40 है, सो विल मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, राइट. तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 35,000 विल गिव यू 28,000, ओके, प्लस 40a माइनस 8 4 जा 32, 320b, ओके. ये एक बार आप घर में सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है, ये सिंपल प्रॉब्लम है. So then do 4 minus 5, ठीक है, equation 4 minus equation 5, 40 will get cut, 311 minus 280, ये आपको क्या देगा, 20,000, 31,000, ओके, 31,000 is equals to 50b, फाइन, ठीक है. Yes, sir. b is equals to 31,000 upon 50 will be equal to 620. b का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, put it in any equation, just choose the equation with smaller number, so your calculation will be less, that's all. You can put in any equation available which you have, you can put it in. 35,000 is equals to 5a plus 40b, then b is 620, just put it here, 40 into 620, 24,800, ठीक है, ये आ गया. 35,000 minus 24,800 gives you 10,200 is equals to 5a, a का वैल्यू आ गया 2040, 620 और 2040. Put it in equation, y is equals to a plus bx, ठीक है. So this gives you y is equals to 2040 plus 620x, पर हमको एक ही पूछा है उसने, राइट, इसमें only one thing was asked, 16, ठीक है, with a population of 16 lakhs, बस into 16 कर दीजिए, हो गया, that's all, into y is equals to 2040 plus 620 into 16, ठीक है, बस हो गया, 11,960 is the answer, okay. So इसको बस आंसर लिख देना है, hence expected demand of scooters for a town with population of 16 lakhs will be 11,960 scooters, ठीक है, just write that, fine. ये हो गया हमारा, so this is for your demand calculation method, ठीक है. डिमांड निकालने के हमने सेल्स फोरकास्ट जो है, सेल्स फोरकास्ट और डिमांड, फॉर दैट वी हैव सीन द फोरकास्टिंग मेथड्स, ठीक है. एंड यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम्स की, इट इज फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ओके, ओके. और उसको बोलते हैं, जो मेथड को बोलते हैं, जो लाइन फिट करते हैं, दैट इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट. मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओके, लीस्ट स्क्वायर मेथड. चलिए, तो अभी तक तो ये हमने 4 प्रॉब्लम्स जो हमने किए थे, ओके. इसके पहले, बिफोर वी डिड दिस 4 प्रॉब्लम्स, we saw 6 methods, correct? 6th method was
ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। ये सारे मेथड्स हमने देखे थे ना, these methods. Yes, sir. Sixth was trend projection method. So after sixth के problems देखे 4, correct? So there is seventh method after 6. It's called as moving average method, ठीक है। So moving average method में क्या करते हैं ना, okay, moving average method ये बिल्कुल इस मेथड जैसा ही है, okay, it is now same as this, बस इसमें क्या कर रहे हैं, you are taking 2001 का आप सेल्स ले रहे हैं, करेक्ट। इन मूविंग एवरेज मेथड में क्या करते हैं कि यू टेक एवरेज ऑफ सेल्स। तो इससे क्या होता है कि एवरेज वैल्यूज लेने से कभी भी जो डिस्टॉर्शन इज नॉट टू मच। सो ठीक है, तो अगर 2003 में आई विल टेक एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, ठीक है, ये तीनों का एवरेज में लूंगा 87.33। इन 2004 में व्हाट आई विल डू, इसमें 80 को मैं ड्रॉप कर दूंगा और 83 को ले लूंगा, गेटिंग। इसको आई व्हाट आई विल डू इज ये 3 लूंगा, इसमें नाउ दीज 3 आई विल पिक, गेटिंग इट, ठीक है। Yes, sir. बस इतना ऐसे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको y का एक वैल्यू आ जा रहा है, राइट, वी आर गेटिंग 1 वैल्यू ऑफ y। उसके बाद ये प्रॉब्लम सेम बन जाता है, ठीक है। सो ओनली थिंग इज दैट फॉर बिकॉज इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 ईयर वैल्यू यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ इट कैन बी 3, इट कैन बी 5। फोरकास्टर जो डिटरमाइन करता है कि हाउ मच एवरेज ही रिक्वायर्स, इट कैन बी 2, यहाँ पे हमने 3 लिए ना, तो 2 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस जो भी ईयर का मैं लूंगा, दिस ईयर एंड बिफोर दिस सम ईयर्स का एवरेज ले लूंगा, सो आई विल गेट अ मोर इक्वलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए ये इस तरह से किया जाता है मूविंग एवरेज वैल्यू, ओके। तो ओके, इसका भी आपको प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं, बस क्योंकि है वही ना, प्रॉब्लम्स क्या देंगे इसके ऊपर, isn't it? It is the same thing. तो ये है आपका, ठीक है। So moving average method, this is another statistical method to calculate trend. में क्या करते हैं, appropriate method is determined by which a period is determined for which moving average is calculated, ठीक है। ये पूछा तो बस शॉर्ट नोट लिखना है, और ओके। While determining the period, normal cycle time should be considered so that short-term fluctuations are eliminated, ठीक है। Period should be in odd numbers such as period of 3, 5, 7 years, ठीक है। odd number period इसमें लिया जाता है नॉर्मली, ओके। और अगेन उसमें ऑल ऑड नंबर पीरियड लेने से उनको ईज ऑफ कैलकुलेशन होता है, जैसे हमने वी हैव सीन इन योर अदर मेथड, ठीक है। तो बीच का वैल्यू मिल पाता है आपको ऑड नंबर्स में, करेक्ट। सो इसीलिए यू टेक ऑड नंबर्स हियर आल्सो, ठीक है। तो बस करना यही है, कुछ नहीं, जो भी एक ईयर लेना है, जस्ट पिकअप एवरेज ऑफ सम प्रीवियस ईयर्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। इतनी चीजें आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ये पॉइंट्स आप देख लेना, इतना बस आपको लिखते आना चाहिए। इट यू विल नॉट इवन हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन भी मुश्किल है इसमें, ठीक है, मे बी 3 मार्क्स, राइट। वो क्या है आपको समझ गया ना, उस हिसाब से यू हैव टू जस्ट राइट, ओके। नाउ period in even numbers will create a problem in centralizing the value of averages, correct। इसीलिए odd numbers में लिया जाता है, ये एक चीज you have to write, and write that period in even numbers will create problem in centralizing the values of averages, ठीक है। क्योंकि वो तो इसका भी है ना, this is, ये जो हम बोल रहे हैं, this problem is for the current method also, correct। इसमें भी आप एवरेज निकाल रहे हो, आफ्टर क्रिएटिंग द एवरेज यू आर यूजिंग द सेम मेथड, करेक्ट। इसमें देयर वाज 1 ईयर का 1 सेल था, बट ईयर फॉर 1 ईयर इट विल बी एन एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स,
बस वही है, अदर देन दैट इट बिकम्स द सेम मेथड. ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी वही सेंट्रलाइजिंग का वो है, इफ यू यूज medium middle values, it is good. Okay, value of moving averages are used to determine for determining the expected amount of sale. वही है, फोरकास्ट करने के लिए यही यूज करेंगे, यही मेथड है, सेम जो ऊपर देखे हमने, इट इज द सेम, देयर इज नो चेंज. ओके, वी आर जस्ट पिकिंग अप एवरेजेस इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ जस्ट 1 ईयर. ठीक है, गॉट इट. सो दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज, नाम से देखिए मूविंग एवरेज मेथड. मूविंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप पुराना ये 1 साल छोड़ देते हैं और नया 1 साल ले लेते हैं, करेक्ट. लीविंग ओल्ड ईयर एंड जैसे एवरेज इज मूविंग, यू आर लीविंग ओल्ड ईयर एंड टेकिंग द न्यू ईयर, सो इट्स मूविंग एवरेज मेथड. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड. ठीक है, इसमें आपको ये 6 में एक एक सेंटेंस यू शुड बी एबल टू राइट. I will tell you what are the points. You can very easily write 6 points. What, say, if you are forecasting, what will you see in a good forecasting method? Okay. One will be accuracy. You want it to be accurate. Like one example I gave. If it is not accurate, it leads to huge losses. Okay. So accuracy should be there. Simplicity should be there. It should not be too complex. Okay. Then economy. So it should not be too costly to say buy that forecast or okay. So वो forecast को to use that forecast it should not be very costly. Okay. तो economy होना चाहिए. ठीक है. Accuracy is very essential. आपको मालूम है, नहीं तो the entire forecast purpose will be lost. Simplicity is essential so that all employees can use it. Economy is essential. If the method is very good but it is very costly to use, okay, then it might not be useful to all organizations. Availability में जो है, all data, whatever values, all forecasting methods need some data, correct? So data which is required should be easily available. Okay, for that method, that is availability. Okay, stability. Stability is something that, you know, it should not basically be unstable. That is, whatever values you are getting, earlier values and values now, it should be in the same base so that you can compare it whenever required. Old forecast, if you want to compare, okay, you should be able to compare it. So it should remain stable. It should not be like one criteria. It is very good. Okay, it's very good. But if one criteria changes, the values, the impact of values change so much that you cannot compare it now. It should not be like that. Okay, so it should be a stable method. Okay, with anything new that comes up, it should not change too much. Then utility. Okay, utility basically is based on the needs of the user. So a good forecasting method is that is useful for me, my purpose. Okay, there can be some other methods which are even more accurate, but I might prefer one method because overall it is, you know, fitting well into all these parameters. Fine. ठीक है, तो ये आप लिख पाओगे. तो ये 6 पॉइंट है, क्राइटेरिया ऑफ गुड फोरकास्टिंग मेथड आएगा. सब में एक एक सेंटेंस लिखते आना चाहिए आपको. इसको याद रखने के लिए एक्रोनिम है. ठीक है, मेमोरी टेक्निक है आपका. ओके, तो ये है एएस इकोनॉमी, एएस यूटिलिटी. एएस है ये पहले वर्ड्स, एएस इकोनॉमी, एएस यूटिलिटी. ओके, दिस फॉर रिमेम्बरिंग. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? No, sir. No questions? No, sir. Not any question. चलिए ठीक है then. So I think we can finish our session here now. Next we are going to start another sub part in the next class, which is capacity planning. Okay.
which is how to plan your capacity. Like once you have the forecast in hand, just now we studied sales forecast. After sales forecast, you'll have to produce. So for production, how to plan the capacity needs. Okay, how much capacity I would require. That planning. Okay, that we will study. Okay, then thank you, and we'll meet on Friday again. And before that, I'll send you a test for chapter 1 and also objective questions, objective tests in the app. Okay. Chali. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.